3, 2, 1. Ramish Safa. How you doing, Ramish bhai? I'm doing good, Kazi. आपके क्या हाल है, bro? Alhamdulillah, alhamdulillah. So I hope this doesn't bother you because I'm on my own. I will be. No, this is fun. Yeah. This is fun. Achha, so you're gonna switch in real time. So this is you, Yeah. right? And Okay. that's me. Okay. And that's this is master. us. This is party. I like this. Yeah, I've been looking at getting this for a while now, just for the sake of it. just for the sake of it. Ramish bhai, क्या हो रहा है? What's going on? यार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. I just got back to Pakistan for a few days. मैं पिछले 1 साल से मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ. Okay. For work, दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया. सेटअप्स बना रहा हूँ दुनिया में अलग-अलग जगहों पे. उस पे बात करेंगे. Yeah, we need to because I that's before also when we were thinking about first off, thank you for doing the podcast. But I asked you yesterday. I was like, podcast करेंगे? It's like टाइम नहीं है. Like टाइम कहाँ जाना है आपको? But माशाल्लाह से this is something that I noticed about you, always on the move. Yeah. Right? Yeah. So what are you doing? Tell me. अच्छा, अभी जब हम इससे पहले बात कर रहे थे, you asked me कि भाई how are you affording this lifestyle, right? Yeah. अच्छा, पहले तो थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं. मेरी लेवल्स वगैरह सही है. Everything's good. अच्छा, पंखी की आवाज वैसे नहीं आती? नहीं. बेहतरीन है यार. This is good. I'm gonna need tips because मेरा जो वो शो है ना कैरम वाला जो मैंने एक बनाया है, उसमें हम पंखे उनके सब बंद रखते हैं और कभी-कभी it gets like a little stuffy. Yeah. 4 बंदे हैं, you know, so खैर anyway. तो भाई लाइफस्टाइल ये है कि आपको पाकिस्तान के हालात का तो पता है. जी. हमने बहुत पहले से, इनफैक्ट आई थिंक हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं. A year and a half. नहीं, एक्चुअली इससे पहले से. जब तुम याद है मेरे पहले ऑफिस आए थे असद डॉक्टर साहब के साथ. असद, हाँ, शो. Yes. उस वक्त मैंने तुम्हें बोला था कि भाई प्लान ये है कि बस एग्जिट्स बनानी है. Yeah. But the thing is, everyone talks, right? Yeah. I think you're one of those people who's like, नहीं, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ. If you must know, if you want to know, I'm telling you, but I'm going. I'm leaving, right? Yeah. Lots of, because people have been talking since then. Yes. Lots of people have been talking since then. Yes. But so what did you do? तो यार सबसे पहले तो मैंने एक सिंगापुर के अंदर कंपनी रजिस्टर की. Okay. So that gave me access to a lot of options. Singapore's fantastic. It's fantastic. Yeah. Web3 कंपनी थी. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी NFTs और क्रिप्टो वगैरह के ऊपर. उस पर भी इंशाल्लाह रिविजिट करेंगे आज. फिर मैंने दुबई के अंदर एक कंपनी रजिस्टर की और दुबई की रेजिडेंसी ले ली मैंने. बट मुझे दुबई जनरली पसंद नहीं है. क्यों? यार एक तो गर्मी बहुत है. Okay. हाँ, it's hot. सही है. It's very hot. Okay. दूसरा ये कि सब चीज़ ना लगता है मेन रोड पर है. There's no ढाबा culture. Everything's the main road. Everything's the main road. Everything has to be big और मतलब वो fancy. It's huge. Like and sometimes like यार देखो हम कराची वाले हैं, तो आपको ढाबे कल्चर का बचपन से शौक होता है. किरियाने की दुकान. हाँ, दुबई के अंदर मुझे वो कल्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला. होगा शायद मैं जिन इलाकों में रहा हूँ. Unfortunately क्या है, उनकी मर्जी है. हाँ, उनकी अपने अनफॉर्चुनेट फॉर मी. Okay. तो वो आई फील लाइक दुबई लैक्स दैट कल्चर. उसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया मुझे बड़ा पसंद है. ठीक है. सो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया. Malaysia is beautiful. I've lived in Malaysia. Yeah. So you know right. और वो ढाबा कल्चर भी है. मतलब छोटे-छोटे वारोंग्स होते हैं, उनके स्टॉल्स होते हैं, स्ट्रीट फूड बड़ा है. Yeah, the one thing I've noticed about Malaysians, it always strikes me, is they're never as anxiety ridden as the rest of the world. मुझे ऐसा फील होता है कि ट्रैफिक जैम्स में मैं फंसा हूँ इन मलेशिया 3 घंटे तक. वो लोग रेडियो ऑन करके चिल बैठे. हाँ, इंडोनेशिया में भी यही है एक्चुअली. I don't understand. हमारा आई डोंट नो अगर वेस्ट का क्या सीन है, बट हम तो भाई 10 मिनट फंस जाए तो फिर ब्रो, स्पेशली इन कराची तो आप वो नहीं है मेकर लेन वाला जो सिचुएशन है ड्यूड, अपनी बना लो. आई एम सॉरी आपका गार्डन है लेकिन अभी तो रोड है. तो नेक्स्ट जो मूव है वो प्रॉब्ली इंडोनेशिया के अंदर. आई एम रजिस्टरिंग अ कंपनी. Okay. और मुझे हाई चांसेस ये हैं दैट आई विल जस्ट मूव टू इंडोनेशिया इन द नेक्स्ट ईयर और सो परमानेंटली. You like it? It's pretty? I love it. एक तो वेदर बड़ा अच्छा है, फिर ये कि फूड बड़ा ज़बरदस्त है. Yeah. ये जो आपका ढाबा कल्चर वाली चीज़ है ये बहुत है. And मुस्लिम है. हाँ. आपका यू कैन प्रैक्टिस सुकून से. अजान की आवाज़ आती है, जुम्मा पढ़ने जा सकते हैं. तो आई थिंक वो सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं. मलेशिया में भी रहा हूँ मैं, बट मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई फील लाइक आई पर्सनली लाइक इंडोनेशिया लॉट बेटर. How come? आई डोंट नो मैन. आई जस्ट वो बस कुछ जगहों की वो वाइब्स होती हैं ना. मलेशिया मुझे थोड़ा सा फॉर मी इंडोनेशिया के अगेंस्ट थोड़ा सा बोरिंग लगा. मुझे थोड़ा सा प्रिटेंशियस फील करता है मलेशिया. मलेशिया लाइक दे आर ट्राइंग टू बी
they're trying to be the West's darling in a way, where they're like, look at our skyscrapers. Indonesia's like, bro, jo hai नहीं, wo hai. Indonesia के Jakarta में actually ऐसा ही है. You lived in KL. I lived in KL. KL and Jakarta are very similar, but Jakarta is like, I feel like KL on steroids. तो और skyscrapers हैं, और chaos है. और मगर वो chaos अच्छा लगता है. आप कराची से हो तो you can't live without chaos, right? But it's controlled. It's controlled. Security का बड़ा good scene है. तो I considered a lot of options पिछले 2-3 साल के अंदर. मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि मुझे गोरे मुल्क में रहना नहीं है. You did say that because most people are trying to leave and go to Canada and stuff, right? Or America or जो भी. But you were like, नहीं, मैंने नहीं बर्दाश्त करनी उनकी. नहीं. कर लिया उनने जो करना था. हाँ, बस तो Southeast Asia I personally have always liked. तो मैं दुबई में रह रहा था काफी टाइम, फिर मैं इंडोनेशिया में था काफी टाइम. अभी भी मैं 2 महीने रहकर आया हूँ. हाँ. हमने वहाँ चैनल्स भी बना लिए बाय द वे. लोकल चैनल्स भी बना. यूट्यूब नहीं है अभी, सो इट्स शॉर्ट फॉर्मेट राइट नाउ. अब यूट्यूब पे है बट लॉन्ग फॉर्मेट अभी पब्लिश नहीं कर रहे. और इंशाल्लाह ये कि अगले 1 साल में probably हम 3 चैनल्स और बना लेंगे. Inshallah. Okay. So what do the companies do that you're setting up? What are they for? Graphic, NFTs? यार, so I'll tell you the categories जिन चीज़ों में मैं काम करता हूँ, राइट. सो एक चीज़ तो इज डिजाइन, डिजिटल डिजाइन एंड आर्ट, जिसमें इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, एनिमेशंस आ जाती हैं. That's your bread and butter, number one. Say. Actually, that's not my bread and butter, but it is a significant part of not it. Anymore. And not anymore. That's where you started. That's how it started. Okay. उसके अलावा then there's content production. Okay. एंड नॉट कंटेंट सिर्फ हमारे लिए, बल्कि ये कि दूसरे लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए, B2B मतलब एक्चुअल सर्विसेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज कंटेंट प्रोड्यूस करने की. तो लाइक एन एजेंसी मॉडल के वो कम. हाँ, आई डू दैट टू. नो बट इज इट लाइक, तो वहाँ पे दुबई में एंड इंडोनेशिया में आपको ये नहीं फील हुआ कि देयर वर पीपल अ लिटिल बेटर देन यू स्किल वाइज? How are you competing in that market? I feel like हर जगह आप जाते हैं तो there will always be people who are better than you, and then there will always be people who जिनसे बेहतर आप हैं. तो वो आपको बीच में कोई ना कोई जगह मिल जाती है. Okay. Sir, competitiveness तो आपको बनानी पड़ती है ना अपने काम के अंदर. तो there's always something that you can offer. तो content है. तीसरा इज Web3 सर्विसेज, जो कि अभी थोड़ी स्लो हुई हैं बिकॉज Web3 इन जनरल काफ़ी स्लम्प में चला गया. NFTs हो गया. हाँ, या NFTs, क्रिप्टो वगैरह, बिकॉज अभी काफ़ी शदीद बेयर मार्केट चल रही है. मैक्स पेन चल रहा है, तो हर किसी को तकलीफ हुई है. नोबडी इज इन्वेस्टिंग, नया पैसा नहीं आ रहा. तो कोई बिल्डिंग के लिए कोई चीज़ अभी इट डजंट मेक सेंस. बट जिस वक्त लास्ट टाइम हमने बात की थी, उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, प्रीटी बिग बैग. तो फिर वो उस पैसे को रोटेट करना वाज लाइक इजी फॉर मी. वो वाली बात है ना, it takes money to make money, and you have money and a good head on your shoulders, obviously. I mean, you could blow it all up. You could do that. I've already done that once. Oh no. Oh no. You too, yeah. तो अब जो है वो मुझे पता है कि क्या करना है. पैसे मैं उड़ा चुका हूँ, बहुत सारे पैसे उड़ा चुका हूँ 2011-12 के अंदर. तो एक ये है. एंड देन फाइनली देयर इज कंसल्टेंसी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट. आई हैव डन दैट. वी डू दैट टू, कि भाई किसी को अगर बनना है, फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, उसको जो है वो सोशल मीडिया पे एज अ स्टार राइज होना है. Yeah, some people want to be in front of the camera. और they उनको don't want पता to be नहीं behind. होता कि क्या है, किस तरीके से होता है. तो हम लोग को वो फॉर्मूलाज हम लोग क्रैक कर चुके हैं. So we sell those services as well. Okay. So that's 4 things. Okay. Yeah. But okay. So my question then becomes this, and this is a question I'm sure people have asked you on your Instagram, whatever else. See, there's other people who can do all of these things. Yeah. Right. But there has to be something about you that enables you to monetize, capitalize on these skills. Because again, are you the best video maker? Probably not. No. Are you the best artist? There's better artists, right? We know better artists, right? And I'm not saying that is about this step, but you know, so there has to be a fifth thing. Yeah. What is the actual thing that you do? Yeah, I feel like I'm a really good businessman. Okay. And I feel like that's what sets me apart from a normal video creator who's really good but who's not really good at business. An artist who's really good at whatever they do but उनको sell करना नहीं आता. मुझे बेचना बहुत अच्छे तरीके से आता है. मुझे मैंने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा हुआ है, तो मुझे वो जो रग पकड़नी बड़े अच्छे तरीके से आती है ऑडियंस की. तो जब मैं ऑडियंस की रग पकड़ सकता हूँ, तो इन अ मीटिंग, इन अ बिजनेस मीटिंग, you've lost
the second you walk into the room. All right. So I've that's gotten your interesting. business already. Yeah. So ये वाला scene. So I think Alex Homosi एक शख्स है. Yeah. He's fantastic, Yeah. and he describes that as lead generation. Yeah. He's like, how do I generate leads, Yeah. right? And often ज़्यादातर जो अपने लड़के लड़कियां जो भी आपसे बात करते हैं who wonder Yeah. how you make this kind of money, I think that's what they're confused about is everything can be monetized. Yeah. That isn't, पहली बात, that's not a bad word, monetization. It's not. right? मैंने actually कल तुमने वो एक रील लगाई थी कि हाँ. हम अपनी ख्वाहिशात को जो है वो क्या शर्माते क्यों हाँ, हैं? शर्माते क्यों हैं? मैंने हाँ. उस पर स्टोरी बनाई थी कि भाई बिल्कुल सही कह रहा है ये हाँ. लोग मोनेटाइजेशन को बड़े गलत तरीके से देखते हैं कि इट्स इविल. Okay, but here's the thing, right? Interesting. This is the cognitive dissonance in our Yeah. muashra, and this is where I feel you do not suffer from. Yeah. So what you see is what you get with you. Yeah. मैंने ये रील बनाई ना, Hmm. but अगर आप मेरी डीलिंग्स ये ब्रांड मैनेजर से देखो, इस तरीके से नहीं होती है. Hmm. I'm always about यार मेरी artistic expression. क्यों मगर? Bro, but listen. Let's talk about that. What about it? Well, I'll tell you what it Yeah. is. It's from your childhood. Hmm. 100% is from your childhood. I feel like there is wounding that you pick up when you're young, Yeah. super young, Yeah. right? And you're trying to just make kind of heal that on your own. If you don't go to therapy, if you don't process it in the right way, Yeah. you end up doing this. You know, for instance, एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ, same vein में, but we'll come back to that right away. Yeah. We're both passionate about working out, Yeah. right? We love working out. We agree it's really good for people, especially men. Yeah. Everyone should work out. Ask me the last time I went to the gym. It's been a week, right? So फिर जब सब तो ये क्या है? This is cognitive dissonance, right? And I feel like people like you are an excellent example of what happens when you kind of fight the cognitive dissonance and you're like, okay, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, right? And so I feel like, you know, when people, because I've seen some people interact with you on social media, they're like, yaar, they're angry at you. Yeah. But really, they're not angry at you. They're angry at themselves. Of man. course they are. Of course they are. But they're angry at the fact कि यार हाँ ये सब बातें सही बोल रहे हैं. हाँ ये सब skills भी हैं. How do I become him or some version of it, Yeah. my own version of it, right? And so I feel like if you ever saw me, you'd be really frustrated if you saw me in a brand meeting because you'd be like, no, I know you don't believe that. What are you doing? Yeah. You know, yeah. but in that mind, wo wali baat hoti hai, you in that moment, sorry, you go into your default mode. Were you always like this? No, in your I was default actually mode? exactly. Yeah. ये बड़ा अच्छा point तुमने raise किया because a lot of my content creator peers Yeah. suffer from exactly that problem. course. कि you're artist हैं, हम artist हैं. Yeah. And I feel like शुरू में जब मैंने अपना journey start किया, I was exactly like that. कि नहीं बस मेरी मर्जी और पैसे नहीं, I don't care और मेरा art ये वो. But then I feel like I just realized very quickly कि बातें चोदने से तो घर नहीं चलता ना. No. Sorry. No, please, yeah. नहीं चलता है. आप कुछ भी believe करें, ठीक है. But if you, ठीक है, you know, if you're probably like Kanye, that's great. Yeah. But we're not. No. So you know, so you have to be realistic with आपकी actual औकात क्या है. हाँ. हम सब की. हाँ. ठीक है. और हमारी औकात ये है कि हम बहुत छोटे-छोटे pegs हैं एक बहुत बड़ी system के अंदर. And you know, as soon as you realize कि भाई ठीक है, artist ये, artist वो, artist ये, but then what does that accomplish at the end of the day? Pain. Suffering. Lots of pain. Right? Yeah. Suffering. And the bottom line is it just gets you pain. Yeah. आपकी ego आपको हमेशा hurt ही करती है. और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल बेशरम बन जाएं. नहीं. But like, I think there's a very healthy balance between being arrogant about your work and being realistic about making money off of it. And शुरू के अंदर मैं था ऐसा, but then I started realizing कि उस arrogance की वजह से there were opportunities that I could have taken that would have, जो अभी जिस point पे मैं हूँ financially, I probably would have gotten there a lot quicker. All right, okay. तो मुझे वो हुआ कि यार मतलब ठीक है पहुँच गया, but 4 years earlier भी तो हो सकता था. वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से opportunities miss हुई. And I also realized that it was very difficult for other people to work with me. Because when you're an artist, like I said, you're arrogant, right? Sure, okay. तो आपकी arrogance फिर अब if you're, अब हमारा एक business है, ठीक है, उस business में 2 business developers हैं, मैं creative हूँ, मगर मेरी मर्जी चल रही है. आगे client रुका हुआ है, नहीं मैं जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं बनाऊंगा. जब जो मेरी मर्जी आएगी वो उसको accept करना जरूरी है, वरना fuck him. तो
I started realizing कि यार ये this is just hurting the process, this is just hurting the team, this is hurting the unit, and वो बेचारे सर झुका लेते थे because I was the guy जिसके ऊपर पूरा unit rely करता था, but then I was like, this is so stupid यार मतलब. But I think also in all of that is a point जहाँ पे आप you come to terms, आप ये फैसला करते हो कि हाँ ठीक है यार ये मैं पैसे के लिए भी कर रहा हूँ, right? या तो या फिर आप पैसे के लिए ना करो ना, फिर आप अपने लिए करो, right? And then don't expect. But Kazi, that's so difficult, right? Unless you're loaded as fuck. Yeah, I think okay, everybody is lying when they say हम पैसे के लिए नहीं कर रहे. No, yeah, that's a lie. I think everybody is lying when they say like fuck you, like that's तो सही है फिर monetization off कर दो. हाँ. क्यों monetization start की हुई अपने YouTube की? मतलब then don't do it at all ना. मतलब आपके पास आप लेते हैं ना. हाँ. The guys who say कि हम पैसे के लिए नहीं करते, वो भी तो sponsorships लेते हैं ना. Of course. क्यों लेते हो? नहीं लो. Monetization के पीछे भागते हैं ना. नहीं करो, just बांटते रहो. नहीं बांटेंगे. Because they know कि वो झूठ है, but for I don't know कि वो क्या point होता है जिसमें वो अटके हुए होते हैं कि नहीं बस they have to stick to this proud version of themselves कि यार अगर मैं अपने आप को artist नहीं बोलूंगा तो फिर then who am I, right? Yeah. You're a businessman. Yeah, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I think yeah, आपने बड़ी जबरदस्त बात highlight की. I think that has to do with virtue signaling. Yeah. If I don't make you, this is the thing ना. How can I, when I enter the room, there's two, like अगर हम, if we take everything to be a competition, unfortunately most things are, right? If I enter the room and I'm like, okay, how do I beat this guy? Well, there's the difficult path, which is my content needs to be better than yours, and I need to be on my game. If you're up at 6, I need to be up at 5 a.m., work out, do all those things, do that, right? I'm not going to do that. So what am I going to do? Well, I'm going to virtue signal. Yeah. So I'm going to make you feel bad. So I'm going to start thinking, or I'm going to try and make you think like what you're doing is somehow inferior. Yeah. यार तूने अपने आप को बेच दिया रामेश. Yeah. इस तरीके से नहीं होता है. And again, cognitive, I am not pointing at anyone except myself, because the last podcast we did, if you remember, I hadn't even put chapters in. Yeah. Why are you doing that? Because मैं podcast किस लिए कर रहा है? Podcast किस लिए कर रहे हो? सही है, content बंदा बना सकता है, videos खूबसूरत होती है. Podcast किस लिए की जाती है? सुनने के लिए ना. Why are you making it difficult for the listener? Yeah. It makes no sense. Yeah. But we get stuck because virtue signaling, because I'm better than you and everyone else who's doing a podcast, because मैं authentic तरीके से करता हूँ, मैं नहीं बेचता अपने आप को. I feel like एक चीज जो और मैंने सीखी बहुत early on was के, और I've spoken about this on my Instagram as well, के competition करना is a great thing. Yes. मतलब सोचना competing के बारे में कि अच्छा यार इसने इतना अच्छा काम किया है तो चलो मैं भी ऐसा करता हूँ. But sorry, मेरा chain of thought. No, you said कि एक और चीज मैंने सीखी, मैंने आपको बोला कि cognitive dissonance होती है, because if sorry. Fuck, फिर निकल गया. Oh no, twice now. यार ये तुम्हारी लाइट है जो I'm sorry, dude, I'm sorry. But this is so fascinating. Come on. It's such a cool little thing. Alhamdulillah. But it's okay. It's a necessity though. Yeah. I know. I really wish I could just be here. No. I no problem. Yeah. Focus, come on. Look at me. My eyes are up here. तुमने last बात क्या बोली थी कि हम अपने आप वो virtue signaling करते हैं. And cognitive dissonance होती है, क्योंकि cognitive dissonance का ये मतलब होता है कि मैं सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ. Because my thing is कि how do I compete with you? I can't compete with you. Okay. Competition की जहाँ बात है ना, so मैंने एक चीज बहुत early on realize कर ली थी कि भाई जब आप कुछ काम करते हैं, there will always be someone who's better than you. Fair, okay. Okay. So you need to be okay with the version of yourself and just compete with what you were yesterday. ठीक है, बस आप अपनी लेन में रहें, और जो भी दूसरे लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं उनसे आप चीजें निकाल तो सकते हैं अगर आप पॉजिटिवली उनको देखें. But if you're trying to run into in somebody else's race, तो वो बड़ा destructive एक method होता है. For example, I started making reels because of you. सीधी बात है. And I've spoken about this before जब तुम मेरे घर पे when you were at my studio. Yeah. But you're legitimately the reason I started making reels, because you were making reels and I was like, yeah, this is cool. Yeah, it's fun. Kazi is getting numbers. Kazi का अच्छा content बना रहा है. Yeah. मैं भी तो कर सकता हूँ. एक और चीज, ये आपने इतनी गुनाहगार बात की, आपने बोला numbers नहीं देखते भाई हम यहाँ पे जो है ना सिर्फ खूबसूरती के लिए content. Well, sorry, yeah. तो I was legitimately inspired to make reels because of you.
हम लोग बैठ के, मुझे याद है अक्टूबर में मैं इंडोनेशिया में था, हम सब बैठे हुए तुम्हारी रील्स देख रहे थे एंड आई वाज लाइक यार दिस इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. और रील्स आप सुनते आ रहे थे ना, बट लाइक वो होता है ना, अबे यार कौन शॉर्ट फॉर्मेट पर, हम तो लॉन्ग फॉर्मेट वाले हैं. बट मैंने ये चीज मैं पिवट बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ. आई डोंट, आई एम नॉट लाइक अच्छा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे नहीं. काजी ने मुझे इंस्पायर किया, चलो घर चलो. हम लिटरली पहुंचे हैं, द डे वी लैंडेड उसके तीसरे दिन मेरी पहली रील आई थी. और मैंने फिर वो हमने बैठ के पूरा स्ट्रक्चर सोचा एंड आई कुड हैव बीन लाइक यार मैं काजी से compete करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, बट see I decided to take the good stuff from you, right? Yeah. And I also feel कि it's okay to take stuff but not compete. I think it builds camaraderie actually. Yeah. I think you know what I mean, right? Yeah. तो जो कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आ गया ना, मुझे लगता है ठीक है, अच्छा होता है, कंपटीशन इज हेल्दी, बट आई फील समटाइम्स पीपल टेक इट अ लिटिल टू फार. कि वो हर किसी से compete कर रहे होते हैं. They're just competing, trying to compete with everyone, and that's not humanly possible. No. Because then you lose what you're trying to do. You lose what you should have become if you were not going in that lane. मैंने तो अपने बारे में सीखे भाई, मैं दानिश मेरे साथ जो I mean Danish is great. I never tried to become Danish, but I took elements from. अब मैं compete करता कि नहीं मेरी जो cinematography है वो दानिश जैसी नहीं होगी, तो मैं ये नहीं कर सकता. फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे. कुछ भी नहीं कर रहा ना. सही है. जुनैद अकरम का पॉडकास्ट है जबरदस्त. अब मैं अपना पॉडकास्ट बनाऊंगा तो जुनैद से बेहतर होना. क्यों बेहतर होना चाहिए? You can build your own version, take things from great people around you, tell them that they're doing great jobs. Absolutely. सही है. क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा मिसिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर कि लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें नहीं करते. सही. I think this is very interesting. It's specifically, that is specifically a male problem. आप देखेंगे खवातीन होंगी ना यार, खवातीन करती हैं. हाँ, हमारे माशरे में भी माशाल्लाह से खवातीन होंगी, they'll get around. Content creators को मैं नहीं बोल सकता. I've just not met as many content creators, female content creators. But वैसे generally हमारे माशरे में जो खवातीन होती हैं, they'll take the first chance to compliment. अच्छा, this looks good. Oh, the hair looks good. But if I see you and I say that, I've somehow emasculated myself. Yeah. Do you know what I mean? Like, I don't understand what the problem is. If I get वो वाली बात कि you're doing fucking great, and I hope I do great also. Yeah. You know? Yeah. It's not complicated. But आपको लगता है नहीं वो ख्वातीन नहीं करती? नहीं मुझे I don't have enough data to you know. This is also an anecdote. Form an opinion on it कि वो करती है नहीं करती. But हाँ, मर्दों के अंदर तो definitely है. और I feel like कि फजूल की कंपटीशन है यार. फजूल का कंपटीशन. I think कि आपको, like I said, if someone's doing a great job, you should aspire to do a great job as well. But just thinking कि नहीं वो sponsor उसके पास नहीं है, मेरे पास आ जाए, क्यों? मतलब क्यों? उसकी क्या जरूरत है? Yeah, I think that also, I don't mean to get religious at all. Lekin I think that also is contradictory to what you believe in as a Muslim. कि आपका तो रिस्क लिखा हुआ है ना. तो किसने लिखा है? बिल्कुल. तो आप टेक्निकली शिकायत क्या किससे? हाँ, क्या कर रहे हो आप ये? ऊपर वाले से शिकायत क्या कर रहे हो आप ये? You know what I mean? आपका तो रिस्क लिखा हुआ है ना, तो वो तो. But yeah, Ramish bhai, I think people get stuck because times are hard. You know, ये बातें कहना, AC का कमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना आसान है. But you know, implementing them daily, and I feel like that's the other thing where people get frustrated with you is they're like, नहीं, तो क्रिप्टो में सारे पैसे डाल दे. But you're like, नहीं, writ large एक philosophical concept है, इसको accept करें कि मेहनत आपने करनी है, कि जिम्मेदारी आपने लेनी है. And they're like, अच्छा, Ethereum, नहीं, but you understand what I mean? Because it's so much easier. Think about it for a second. Yeah. So much easier for them to put all their money, all their savings on the line. Yeah. That is easier than changing themselves fundamentally, which is what you're asking them to do, is change yourself fundamentally. Yeah. Stop thinking about things the way you're thinking about them. In चीजों के बारे में इस तरीके से सोचो. That is essentially what you're saying. Yeah. You know? मगर I'll come back again, जो हमने शुरू में बात की थी कि competition वाली चीज होनी चाहिए. But I'm saying this to जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, try to build your own world and try to make it as best as you possibly can. ठीक है, आप वो ना हो, mediocre ना हो, आप complacent ना हो, उसमें मुसलसल चीजें करते रहें. But if you're just constantly looking at other people, यार काजी ने, अब तुमने स्टाइल चेंज किया है. Yeah. सही. अब मैं बोलूँ नहीं मुझे भी चेंज करना है क्योंकि काजी ने, क्यों? और ये मैंने देखा है, I've seen like इरफान की certain style की वजह से a lot of people just started doing that style, and I know for a fact कि वो out of inspiration नहीं थी, because अगर out of inspiration होती तो then इरफान should have gotten credit, right? Yeah.
सही है श्योर भाई, मैं तुम्हें क्रेडिट दे रहा हूँ ना, हाँ तो वो क्रेडिट नहीं नजर आया ना। नहीं। मैं इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से देखता हूँ कि कौन किसके बारे में कितने अच्छे तरीके से बात करता है। It's interesting that you also don't get emotional about this. I don't. Because you know, if I was if I was taking in that much data, I'd get emotional about it कि हाँ यार ये फिर हम क्यों इतने बुरे हैं? Why are we evil? Why is there evil in this society? Why are we bad people? But with you, I also see this कि यार देखो, don't let any of this get under my skin. ठीक है, ये इस Yeah, तरीके से है, and this is what the facts are. Let's move on. it's work man, It's work. it's work. तो मतलब बस करना है, अच्छा काम करना है, चीजें देखनी है. If you're again emotionally तो बंदा attach होता है, but it's at the end of the day it's just work. Just you have to go to work. Yeah, I think that's a super interesting concept, work, because मार्क्स ने इस चीज़ के बारे में बात की है. रिसेंटली बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपका जो काम होता है ना, that really just anchors you as a man is work, right? Feeling needed, feeling wanted, feeling required is a requirement for you to have a healthy psychology, for you to have good mental health. And I feel like बहुत ज़्यादा हम जो है ना, because we're emasculating our boys, oh I don't know what it is that we're doing, but बहुत ज़्यादा मर्द जो हैं, स्पेशली जो अपने लौंडे जो हैं, अपने शपाटर लड़के जो हैं, निब्बे जो है, they feel frustrated because they don't have a direction, yes, but even the direction that they are taking, they're going to school, right, and all those things, they can't figure out how to end up somewhere where they'll matter to someone. And you see that even in the way they break up with people. You see that in everything is all of a sudden their world starts to shatter because they think they don't matter to anyone. Yeah. Right. And I think we approach the same subject with different methodologies. मेरा हमेशा ये होता है, आपका होता है, fucking wake up, what's wrong with you, right? And मेरा I'm तो a little too harsh with my approach. I think it's good. I honestly think it's good. But मेरा ये होता है कि यार, of course you matter. Right? And I think you need to matter to yourself, but of course you matter to other people. They have a very stupid way of showing it sometimes. Like, I don't want to call this stupid, but me and my dad, we've never said I love you ever in my life. I'm 30 years old. Oh, same, bro. Same. I hate it. Absolutely hate it. But it doesn't mean he doesn't care about me. Right? अगर मैं इसको ये बोल लूं कि यार इन्हें नहीं बोल, so you have to, in the end of the day, inspire someone to believe that of course they matter. Right? Because I think that's missing. And I think work is so much of that. It is. Work I is think so much of that. as a man, part of the reason I feel like मैं इतना push भी करता हूँ is because वो ingrained है मेरी psyche के अंदर बचपन से कि भाई आप काम करेंगे तो आप कुछ होंगे. काम नहीं करेंगे तो आप basically नालायक है. You know. But what does नालायक mean? नहीं, वो नालायक is I think is the wrong thing to use, because I also feel कि नालायक तो खैर हमारी society में बहुत conveniently हर किसी को बोल दिया जाता है. मैं भी नालायक हूँ. नहीं, maybe I think it's not the wrong word to use. But what does नालायक mean? Like क्या होता है? Able ना? Able. So नालायक is basically incapable of doing something, disabled in some capacity, not physical. No. But like probably socially disabled or not mentally disabled. No, but not like mentally. Intellectually maybe. Intellectually. Okay. So I think maybe it is. I guess maybe it is the right word. At the risk of offending people, why is that word so bad? I don't think that word's bad. You know? अगर आप I feel बहुत easily इस्तेमाल होता है. हाँ. बहुत इजीली इस्तेमाल होना. वो तो हमारे माशरे में हर चीज इजीली. क्रिप्टो, अबे क्या हो गया है? पासवर्ड चेंज कर दिया, पासवर्ड प्रोटेक्टर डाल दिया क्रिप्टो. नहीं, अबे ऐसे नहीं होता भाई. मगर हाँ, यू राइट कि यार काम तो करना जरूरी है यार. मर्द को, मैन हैज टू गो टू वर्क. अब घर वालों के अपने लिए, बॉटम लाइन ऑफ कोर्स दूसरे लोगों के लिए भी, बट आई फील लाइक, अच्छा सॉरी मैं एक बात डायरेक्ट कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि पीपल गेट अ लिटिल टू प्रिटेंशियस ऑन पॉडकास्ट. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कोई ऐसी फजूल की बात ना बोलूं कि लोग बोले अरे यार ये एसी में, वही से तुमने बोली एसी में बैठ बड़ी बात अगर डायलॉग मारना आसान है. आई एम ट्राइंग कि मैं उतना ही रियल रखूं जितना मैं असल में होता हूँ.
ऑल्सो सुबह का वक्त है, तो अगर चेन ऑफ थॉट भाइयों और बहनों थोड़ी सी ऑफ हो रही है तो प्लीज माजरत. Come on, dude. You don't have to say that. It's fine. तो काम पे तो यार जाना जरूरी है. और एंड देन इट्स सच अ ब्रॉड टर्म. इट्स नॉट कि बस वो आप हथौड़ा छेनी लेके निकलना है. और लाइक यू सेड, गोइंग टू द जिम Is work. is work. It's even if it's fake You work. have to do it. Yeah. सही Yeah. है. Making effort to look better, काम है. Making an effort to be more presentable, to be more communicative, to be more open with your relationship. That's all work, and Yeah. you have to go to work every day You have to as go a to man. work. As a man, have to go to work. अच्छा, एक बात बताओ मुझे हाँ तुम. जी. ये जो बड़ा अब तो खैर सारे पॉडकास्ट वाले एसी वाले कमरों में ही बैठते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah, of अल्हम्दुलिल्लाह. course. Yeah. आई फील लाइक ये भी बड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एंड रिजल्ट को देख के ना लोग बड़ा उसकी जर्नी के ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दें. सो आई एम प्रीटी श्योर, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ यूर, खैर मैं आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट. मैं अपनी बात कर लेता हूँ. इरफान की बात कर लेता हूँ. एक पॉडकास्ट है, उसमें मैंने सुना कि भाई इरफान के बारे में लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से ये लड़का है और इसलिए यूट्यूबर बन गया, और ये तो विगो में आता था, ये होता था, वो होता था. अच्छा. आई हैव सीन इरफान बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी विद इरफान. Yeah, you know him. आई नो हिम. आई हैव सीन कि वो, अब भाई ठीक है, जो पैसा है जो नहीं है, बट वो डिस्काउंट तो नहीं कर सकते ना आपके जो मेहनत उस बंदे ने वहां तक आने के लिए की है. हाँ. सही है. इसी तरीके से मेरा, अब मुझे लोग देखते हैं, हाँ. तो लोग बोलते हैं ये तो बाय डिफॉल्ट जो है वो अमीर था. बट डूड, यू लाइक, आई हैव नेवर एक्चुअली, एक पॉडकास्ट, पिछली मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ यार, उस पे मैंने एक्चुअली अपना पूरा जर्नी बताया था ना. इफ यू वांट आई विल टेल यू अबाउट इट एज वेल. Oh, please do, but you already have in the last podcast. आई डिड. हाँ. अच्छा. Yeah, I know. Okay, you I know, know right? it wasn't easy. हाँ. You- It was, but I feel like ये भी बड़ा आसान हो गया है अपनी इनकेपेबिलिटीज को या लेजीनेस को जस्टिफाई करना by looking at people who've made it Yeah. and then being like, हाँ ये तो अमीरी तो थे. हाँ, but because he had this advantage or हाँ, such advantage. हाँ. आखिर में कुछ नहीं होता तो रामेश भाई देखो, अगर मैं 6'2" होता ना, तो मैं ग्रेट खाली होता. you know? ये भी बड़ा मसला है that we need to address as content creators कि भाई I get very frustrated by this, by the, and I see this a lot के, और मुझे तो अब बहुत आता है. मतलब if I say something that's like, वो जो स्ट्रगल की बात हो रही है तो डीएम आना शुरू हो जाते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रगल थी, क्या, what struggle are you talking about? And I'm like, dude, fuck you. Yeah, exactly. तो ये do you deal with that as well? पॉडकास्ट के ऊपर जब, आई एम श्योर, मतलब द वे यू टॉक, राइट, इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे ऑफ एड्रेसिंग पीपल. और वो मगर वो इश्यूज जो हैं वो जाहिर है हर लेवल के इश्यूज हैं. तो ये आता है कि भाई आप के कौन से दर्द की बात कर रहे हैं. ऑलवेज दे लाइक कि आप जो है, पहली बात तो आपको ये आपकी जबानी नहीं है, आप बर्गर है. बर्गर का मुझे समझ नहीं आया. बेचारा बर्गर जो होता है, उस इंग्लिश भी उसकी जबान नहीं है, उर्दू भी उसकी जबान नहीं है, करना क्या उसको, सिंधी में कंटेंट बनाऊं मैं. बट हाँ, मुझे ये वाला आता है कि आप ऑब्वियसली प्रिविलेज्ड हो एंड आप ऑब्वियसली इन चीज़ों के बारे में कुछ जानते नहीं हो. ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के बारे में आपको क्या पता होगा. ऑब्वियसली तकलीफें आपने तो नहीं देखी होंगी. ये सारी बातें तो आती हैं बिल्कुल. एंड आई फील लाइक वही आपने जो बोला कि दैट्स अ वे ऑफ देम मास्किंग देयर इनसिक्योरिटी. बिकॉज इफ दे डोंट डू दैट, then what you're saying and what I'm saying, they're going to have to apply it. If they don't do that, if they don't go, Kazi, you're privileged, right? And you're a burger. They'll have to accept that I'm not so different than them. And then they'll have to accept that maybe what I'm telling them about Dostoevsky or whoever, or Rumi or Maya Angelou, maybe that applies to them as much as it applies to me. And after that, well, I mean, they're just going to have to change their life after that, aren't they? Instead, they're just, no. Doesn't apply to me. I'm not 6'2". I'm not, I don't have a full head of hair. I don't have a gym in my house. How can I work out? ये भी आता है. Because आपके पास तो 8 साल की बॉडी उम्र बना सकते हैं, आपके तो घर में जिम है. वही ना. Because हमेशा से जिम था ब्रो. 8 साल की उम्र से जिम था. बाबा ने पहली चीज दी ये थी मुझे, जिम दिया था. I think that's just, again, unfortunately, it comes back to trauma dumping and all those things. I think we get into, my sister uses this word affectionately. She's like, एक हम जो है ना oppression Olympics में चले जाते हैं. Because again, like I said, I have to beat you at something. देख रामेश, तूने मेरी तकलीफें नहीं देखी. हमेशा it'll always be the side eye. I'll be like, you haven't seen what I've seen. Bro, listen, we're all good, alhamdulillah. If you know, we all have our problems, but we're all good and we're all trying. Am I saying don't be cognizant of the other person's pain? Of course not. Of course not, right? But don't take away someone's achievements just because, for instance, there's people that will talk all sorts of crap to Hamza Bhatti.
Hamza Bhatti, Hamza Bhatti has done some fantastic work off late, right? Yeah. They'll And take he's put in the work, man. Dude, put in the hours. He's has he not? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. aggressively and consistently. Exactly, right? तो अब आप जो है, what are you going to take away from him? If I was tall, okay. If you were tall, well, you're not tall, right? If I was fair, yeah. you know, if I had that last name, like, you don't even know what that last name means. Like, what's going on here, right? Yeah. Then people are like, ये डाढ़ो मज़ो आयो क्यों बोलता है? Hindi तो नहीं है. Bro, he doesn't mean, you know what I mean? Yeah. So people are always looking for reasons. And again, I think it's just how our cognition is shaped, where insecurity ho rahi hai, let's deal with it. No, let's not deal with it. Let's just ruin the other person's day. I feel like that also, though, comes from people, men, women, people trying to deal with indifference. क्योंकि एक हमारी बुजुर्ग होती थी, शी पास्ट अवे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. शी वुड से कि आपको बीमारी नहीं मारती है, आपको बेकदरी मार देती है. एंड बेकदरी, loosely translated, is apathy, is indifference, right? And अभी भी अगर आप देखोगे, हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो लोग हैं, everyone who's coming in so aggressive, so hot, वो जो नहीं एक slang होती है, you're coming in really hot, like there's no reason. And coming in hot is basically आप जब land कर रहे हो, it's aircraft, aeronautical terminology, आप land कर रहे हो तो you're like you're coming in, you're coming in hot, right? They're coming in so hot simply not because they don't want to be your friend. I'm pretty sure they want to be your friend, but it's just what will get the reaction. What is a confirmed reaction? Well, if I comment on his family, if I comment on his Zariya Maash not being halal, then Ramish is likely to reply to me, as opposed to just being like, and a meaningful reply, like, you know, getting into me, as opposed to just being like, go fuck off, dude, come on, you know. But खैर अब तो मैं यही करता हूँ. Okay, bro, because how much cognitive capital are you gonna waste? Yeah. अब तो मैंने okay बोलना शुरू कर दिया. That's the worst, no? That is horrible. They will write like long paragraphs and be like, okay. Yeah, that's horrible. That's horrible. Yeah. People can't stand that. But देखो, again, I think there needs to be understanding कि you're one person, you know? And I think एक और मसला ये भी हो जाता है कि if I ever see you getting worked up or any other content creator getting worked up, I will be the last person who'll come into the comment section and be like, chill, bro. I don't, because I know what it feels like. क्योंकि वो आपके ऊपर तनकीद, आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं ना, वो आपको या आपकी फैमिली को बोल रहे हैं. I think you're well within your rights to respond how you. I think I've always been a fan of how you respond. But I think you're well within your rights to respond however you want. Yeah, you can get upset. You know, you know, it's not anyone else's business. अच्छा, एक चीज और ये भी है कि मैं actually इसके बारे में आज सुबह ही सोच रहा था. While you were working out. While I was working out. You have to. जितने भी लोग, I think, I might be wrong, but this is how I look at it and how my perspective of social media has changed. जब तक social media बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता था मेरी लाइफ में और मेरे करियर में और अर्निंग के अंदर, उस वक्त तक मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं. And as soon as I started, you know, वापस से, अच्छा, so I was making money before social media. With your art. My art. Actual art. Yeah. और फिर मैं वीडियो के अंदर आया, and then वीडियो के अंदर फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप डाइव किया, and then for a while it was just that. बाकी सारी दुकानें जो हैं वो फिर मैंने रोक दी. मैंने बोला नहीं, अभी ये मुझे पसंद आ रहा है. That was a very unhealthy phase in terms of how people's commentary was basically affecting me. And then COVID के दौरान ज़ाहिर है कंटेंट बनाना तो आसान था, बट मेरे केस में because I used to review sneakers, right? तो वो कोविड की वजह से बंद हो गया था, तो स्नीकर्स आना भी बंद हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हुई. एंड उस दौरान फिर आई वाज लाइक ओके, मे बी आई नीड टू गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग. तो मैंने वापस अपनी एजेंसी का काम शुरू किया. एंड उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट हैज नाउ बीन लाइक अ वेरी स्टेप चाइल्ड टाइप of situation for me. ठीक है, मतलब I make it, I enjoy it. It's a hobby. Like you have fun. It's a hobby. It's not something जिसके ऊपर अब primarily मैं किसी भी तरीके से depend करता हूँ. As soon as I think that switch happened, it just stopped mattering. Yeah. But you noticed it was good for your content. It was great for my content because then I could be anything. Yeah. Anything. I know exactly who I wanted to be, and I could say whatever I wanted to say. I think ये भी एक it's very personal, right? जब आप directly, because it's your career.
Yeah. It's your job. Yeah. People commenting on that is commentary on your work. But then if it's, let's say for example, if you had $1 million right now, yeah, your content would change drastically, I and think you would so. stop giving fucks. I think so. I really think so. I think about that. I'm like, how authentic am I being? So, alhamdulillah, at least I know this much. If I had like $1 million, I'd still be doing this. Yeah, right? of I'd still be course. doing the podcast. But what I wouldn't be doing is pandering to अच्छा चलो अभी lifestyle कर लेते हैं ताकि brands आ जाएं. Yeah. And so yeah, I think I would be an amplified version of this, Yeah. right? Where I would actually tell people, you know. But you won't pull any punches. No, I would not. Yeah. I would not. And abhi, I feel like जिस phase में तो मैं जब मैं उस phase में था, I was constantly doing that. यार ये नहीं बोलता यार ये नहीं बोलता. Of course, yeah. Constantly ये डर लगा हुआ है कि मैं cancel हो जाऊंगा. At this point, yeah. Okay. What are you going to take away? It. Yeah. What are you going to take away? My Instagram? Okay. Yeah. That's powerful. I was speaking to Raza Samo, and Raza Samo is obviously a comedian, but now he's also a big film star, right? Star. Mashallah se. Yeah, mashallah. So I was like, you know, how do you do all this? He's like, yeah, dekho, at a very young age, apna mazak uda ke and all those things, na. Yeah. I took away one superpower that people have. One of my superpowers is taking away this power from other people. You will not shame me. You cannot make me feel shame for something that I've done or something that I'm doing. And where I think agar generalize kiya jaye, to maybe that's not the best thing in the world. But he's like, but so you can't make me feel bad. Yeah. Right? And I think मैंने वही बोला मैं then that's powerful. then तो फिर उसके बाद क्या है? दूसरे बंदे के मुंह में क्या रहता है? You know? And I think वही वाली बात है आपकी कि is a huge difference. I think Allah ना करे. I think it would matter a lot if someone were like आपके Instagram account like no. What do you want me to do? It's fine. Yeah. I will comply. Yeah. You know? And I think with you, I think that's also super powerful. And again, more reason why people would not like you. Because that's okay though. Yeah, but that's freedom, you know. And what they don't like about you is they want to be free. Yeah, that's what they don't like. Yeah. You know, that's what they see, and they're just like, yeah. But do you? So you know, you do show quite a bit of your life. आपको नजर वजर से डर नहीं लगता? यार लगता है, बहुत लगता है. मुझे हमेशा से नजर रहती है. हाँ. So अब हमारे कल्चर में तो नजर उतारने के अलग अलग तरीके हैं ना. वो अच्छा मेरे घर में मिर्चों का वो बनता है, एक सेटअप होता है. Okay, you know the मिर्चों वाला. I know the lemons वाला. Okay, so मिर्चों वाला सीन ये होता है कि आप I think 7 मिर्चें लेते हैं. 7, yeah, I think. Okay. And then you basically make the person sit, और वो उसके ऊपर सर से लेके पाँव तक somebody will basically rotate those मिर्चें around. आंखों में नीचे. और फिर उनको 7 बार करके. Okay. If I sound middle class right now, it's because I was. Okay. All right. Was. Emphasis, operant word was. और फिर उसको चूल्हे पे रखे मिर्चों को जला देते हैं. So if they don't smell और वो मिर्चें पूरे घर में नहीं भरी, that means नजर शदीद थी, but अब टूट चुकी है. Okay. अच्छा, again this could be superstition and everything, but मैंने ये टेस्ट खुद किया है कि एक ही बैग से मिर्चें निकाली multiple times. क्योंकि मुझे होता था यार ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना. और वो भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी मिर्च उतरवाई, नजर उतरवाई और जलाया. वो नहीं आई स्मेल. फिर उसी बैग से मैंने ऐसी ही रखी और पूरे घर में हर कोई कुत्ते की तरह खांसना शुरू हो गया, बिकॉज वो इतनी मिर्चें थी उसमें. तो अपेरेंट ये तो है. तो मेरी तो जब भी उतरती है ना मिर्चों वाली नजर, तो हमेशा नजर होती है. बट आई ऑल्सो फील के यार मतलब ओबामा को नजर नहीं लगती होगी, जकरबर्ग को नजर नहीं लगती होगी, इलॉन को नहीं लगती होगी. तो जब वो चल रहे हैं तो तुम और मैं कौन है? हाँ, I think हाँ, that's a good way of looking at it. आयतुल कुर्सी बस अल्लाह का नाम. भाई अल्लाह भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में बोला कि नजर है, ऑफ कोर्स है, पर उसका तोड़ भी तो है ना, उसकी प्रोटेक्शन भी तो है. बस आप अल्लाह का नाम लेते हैं, सही है, ठीक है. Nothing's bigger than his name. How do you perceive your content creation now? Because I feel like, so yes, freedom, yes, Instagram, ठीक है, what are you going to do, right? But that doesn't, I don't see maybe consistency wise thoda kam post ho raha hai, but the quality is still the quality, right? Why? Because I don't want to do a bad job at whatever I'm doing. Bottom line, matlab I like what I do and I like to put in the effort, even if it's not for money. It's, I mean, मुझे अच्छा लग रहा है ना. मतलब अब मैं जिम जाता हूँ, पैसे के लिए तो नहीं जाता, बट
I want to push myself because बस वो एक personal excellence है ना, अपनी journey, अपनी दुनिया बनी, उस दुनिया को बस बहुत बेहतर बनाना है. It doesn't matter कि तुम्हारा फ्रेम कैसा दिख रहा है, it doesn't matter कि इरफान का फ्रेम कैसा दिख रहा है, बस मेरा फ्रेम बहुत अच्छा दिखना चाहिए मेरे लिए. तो वो कलर्स भी वैसे ही हैं, वो एडिट्स भी वैसे ही हैं. I can edit those videos all by myself now. You do, yeah. But वो cuts होते हैं, but जो उसके ऊपर वो sprinkle हो रहा हुआ होता है, वो I have a guy for a great, very very talented guy. Shout out to Shazib, who's my editor. Shazib, Shaba. and travel buddy. He travels with me. John, yeah, he goes all over the world with me. देखो ना Ramish bhai, now stuff like this if you're going to do, and then ठीक है, you're going to do it mashallah se, but then if you're going to tell people कि this is what I'm doing, some people are going to get uncomfortable and jealous and all na. It's fine, man. Yeah, I think they're looking at you and they're like, tell us how. But I've told people how. Unfortunately, That's the thing. You've been telling people. Yeah. And I think people, again, वो वाली बात है ना, shortcut वाली बात है and short term memory वाली बात है. People be like, अच्छा तो crypto. Nahi, that's not what he's saying. He's not saying crypto. He's like, you get up in the morning and clean up, dude. That's what he's saying. Go to the gym. Go to the gym. Discipline yourself. It's not. Yeah. तो इसलिए I look at these as artworks ना, छोटे-छोटे. Interesting. All my मतलब जो reels हैं feed पे नजर आ रही होती है ना, it's like आपको एक artworks का collage बना हुआ है. They need to look good. अगर वो एक उसमें off है, उसकी grading off हुई है, या it's like एक bad pixel की तरह नजर आएगा वो. I want it to look good for myself. जब मैं scroll करूँ तो हाँ यार color consistency नजर आ रही है. Yeah. But these are just things जो I feel मुझे personally पसंद है, तो as a byproduct it comes out great for the audience as well. All right. I think that's an interesting way of looking at it. अच्छा मैं एक चीज और बताऊँ. And I wanted to come back to this caricature shop जो मैं illustrations बनाता था एक ज़माने में. That was my first, one of the first things that made me good money. Alhamdulillah. I'm planning to revisit it now. Now that I've done a lot of alhamdulillah सारी चीज़ set हैं. Alhamdulillah. तो अब मुझे ये है कि because अब उस वक्त टीम इतनी बड़ी नहीं थी, उस वक्त जो है वो resources probably limited थी, tools जो अब आ गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं. तो we need to talk about that. Yeah. AI आ गया है, and it's like obviously Ramish bhai chat GPT को बोले मुझे billionaire बना दे, like what? तो I want to now revisit that. Okay. And see कि मैं अब उसको कहाँ तक push कर सकता हूँ. तो मेरे जो मेरे हिसाब से मेरे जो estimates हैं, I've given myself a challenge, और ये भी आने से पहले मैं सोचा था मैं तुम्हें बताऊंगा. हम नेक्स्ट टाइम जो पॉडकास्ट करेंगे ना 1 साल बाद करेंगे. ओके इंशाल्लाह. ठीक है. ओके. और उस पॉडकास्ट में मैं अपनी कैरेक्टर शॉप से $1 million बना चुका हूँ. All right. Yeah. Do you need partners in this caricature shop or what's going on? What's the deal here? और फिर मैं पूरा अपना प्रोसेस बताऊंगा 1 साल बाद कि किस तरीके से मैंने अभी प्रोजेक्शंस लगाई हैं. क्या वो टीम सेट होना शुरू हो गई ऑलरेडी, स्पेस मैंने सेटअप कर लिए. आज क्या सैटरडे है ना, मंडे से विल स्टार्ट पोस्टिंग, विल स्टार्ट रनिंग एड्स. महीने का $1,000-1,500 का हम उस पर एड स्पेंड लगा रहे हैं. एंड 1 साल बाद काजी आई एम गोना हैव $1 million जस्ट फ्रॉम दैट. दूसरी जगह किससे तो हैं, बट जस्ट फ्रॉम दैट. ये मैं इस पॉडकास्ट पे बैठ के बोल रहा हूँ सो दैट मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है. हाँ, आपके रहना चाहिए. अल्लाह रहम करे. नेक्स्ट पॉडकास्ट में I'm taking $1 million out of that business. And then I'll tell people कि it's not just crypto. Literally मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें की है ना, मैं एक-एक करके सबसे 1-1 million निकाल के लोगों को दिखाऊंगा. ये देखो भाई, ये देखो. Yeah, it's okay. So when you say caricature shop though, yeah, explain that. What do you mean? So basically caricature shop as a business started from अच्छा, so उसकी मैं बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ. मैंने कच्ची गोलियां कॉमिक्स के नाम से कॉमिक बुक बनाई थी हम अपने बॉयज के साथ मिलके. बहुत मशहूर हुई वो. उसके बाद मुझे बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा. आई थिंक आई स्पोक अबाउट दिस लास्ट टाइम कि वो हमने इंडिया भेजी कॉमिक कॉन में. उन्होंने बोला भाई आप इतना अच्छा काम ही नहीं है आपका, हम तो कभी फीचर कर ही नहीं सकते आपको. तो दैट वाज लाइक ओके फक यू, आई एम गोना गेट बेटर. फिर आई स्टार्टेड टेकिंग कोर्सेज. तो मैंने फिर एक डिज्नी के एनिमेटर से पूरा एक कोर्स खरीदा. अच्छा, वो डिज्नी के एनिमेटर जो है वो असाइनमेंट्स देता था, एंड इट वाज अ कार्टून. एंड प्राइमरली मैं फेसेस बनाने में मुझे हमेशा से बड़ा इंटरेस्ट रहा है. तो इट वाज अ कैरिकेचर एंड कार्टूनिंग कोर्स. ओके. कैरेक्टर डिजाइन भी उसमें था, बट प्राइमरली कि भाई आप अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो हाउ डू आई मेक यू और अ कार्टून वर्जन ऑफ यू राइट नाउ. ओके, दैट वाज द कोर्स. तो वो असाइनमेंट्स देता था कि भाई ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपको अब नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स चाहिए.
तो मैंने सोचा ये कि यार जब असाइनमेंट करनी है और ड्राइंग करनी है, व्हाई डोंट आई स्टार्ट मेकिंग पिक्चर्स ऑफ माय फ्रेंड्स, वो भी खुश हो जाएंगे और असाइनमेंट भी होते रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले असद की बनाई, डॉक्टर साहब की वो मैंने बनाई। वो असद को मैंने बोला यार तुम बस कैन आई यूज योर फेस, आई एम जस्ट गोना मेक एन आर्ट वर्क। वहाँ बना लो भाई। अच्छा वो बना लिया, वो मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, टीचर खुश। इधर असद ने पोस्ट किया तो 4-5 और लोग आए, यार हमारे लिए भी बना दें। मैंने बोला होल्ड अप ऐसे तो नहीं बनाऊंगा, ऐसे तो नहीं बनाऊंगा। तो उस वक्त मुझे याद है मैंने 500 रुपए, आई वाज लाइक यार प्रैक्टिस ही तो हो रही है ना मेरी, चलो 500 रुपए का कर लेते हैं। तो वो 1 से 4, 4 से 5, एक हफ्ते में 40-50 लोगों की मेरे पास डीएम्स आ गए कि यार हमारे लिए भी बना दें। आई वाज लाइक शिट, दिस इज अ बिजनेस। लिटरली असद का जब मैंने आर्ट वर्क बनाया उसके शायद 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद मैंने कैरिकेचर शॉप के नाम से एक पेज स्टार्ट किया फेसबुक पे। एंड मुझे अच्छी तरह याद है रमज़ान का शायद दूसरा या तीसरा रोज़ा था, मैंने ऐड रन किया $5 या $10 का, एंड आई स्लेप्ट। मतलब मैंने अब उसके तरावी के बाद जो है वो ऐड रन किया और मैं सो गया। मैं सहरी में उठता हूँ तो मेरे पास कोई 250-300 डीएम्स आए हुए थे कि यार हमें भी चाहिए, प्लीज। तो पहले ही गो में वो 500 से 1500 हुआ। मैंने बोला चलो 1500 देखते हैं कितने लोग पैसे देंगे। You're making all of this yourself, by the way. All of this is you. all of this myself. Yeah, okay. Back then, फिर बाद में टीम वगैरह आ गई थी, तो वो 1500 हुआ, फिर 1500 से 2000 हुआ, 2000 से 5000 हुआ, 5000 से 10000 हुआ, and then there were times that I was doing 150-200 caricatures a month. तो फिर मैंने प्रोसेसेस बना लिए थे, स्पीड बहुत तेज। अच्छा I did that for 4 years नॉन स्टॉप। Wow. सुबह 10 बजे से बैठता था ड्राइंग करने और रात के 11-12-1 बजे तक बैठा रहता था। So you had money, alhamdulillah. Kachi Goliyan ke baad, before crypto, you had money. I did. Right? I did. People, I don't know why people are confused about this. मतलब it was good money, alhamdulillah, it was great money. It wasn't as crazy जो अभी है, but थी वाला कुछ। I was traveling constantly, I was buying everything जो खरीदनी जो मुझे पसंद आती थी, because बहुत ये बिजनेस था यार, चलता हुआ बिजनेस था। और फिर उसके साथ फिर म्यूरल फैक्ट्री के नाम से एक बिजनेस के अंदर मैं पार्टनर बना, इसमें म्यूरल्स बनाते थे हम। फिर उसके बाद एजेंसी खोली, एजेंसी के अंदर वी डिड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, कैंपेन्स, ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स, DVCs, TVCs। कोविड के दौरान वो रैम्पेंट था ना, बिकॉज डिजिटल पे सब आए हुए थे, तो वो कोविड के टाइम वो बड़ा अच्छी तरह मैंने चलाया। फिर मैंने मास्क लॉन्च किए कोविड के दौरान, आई लॉन्च्ड अ ब्रांड ऑफ मास्क एज वेल, तो वो बहुत चला। But I think in all of this, एक जो चीज which needs to be focused on is how quickly you're able to just change direction. You know, like zigzag. Yes. And that is a flex that I'm not ashamed of making. कि मेरी सबसे बड़ी strength यही है कि I can pivot very very quickly. Yeah, माशाल्लाह से। Like वही जो आपने बात बोली कि हाँ ठीक है, एक वीडियो देखी अच्छी लग रही है, बना तो मैं भी सकता हूँ, बना ली। Right? There's no give. Yeah. There's no, you know, on those decisions, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. There's no जिसको बोलते हैं, there's no fat on those decisions के no, there's none of that. No. If it's happening, it's happening right now, or it's not happening, and that's fine. And then we'll move on to something else. I think that's super interesting, but that I think readily segues into AI. Right? अब आपने जब caricature वगैरह बनाया था, right? And you were learning and all that. Has AI taken the Midjourney and all the? Have they taken the human element out of it? No, I don't think so. Explain that. यार, so पहली चीज तो ये है कि अभी AI की accuracy इतनी अच्छी नहीं हुई है। So for example, if you were to put your photo, जिस तरह तुम्हें चाहिए AI अभी उस तरह बना के नहीं दे सकता, अपनी मर्जी से बनाएगा। जनरेट कर रहा है ना, मल्टीपल जगहों से बेसिकली डेटा फेच कर रहा है। So if you give it like let's say 10 instructions, for example, if you give me 10 instructions कि यार रमेश भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए कि मेरे हाथ में सोनी का ये वाला कैमरा हो और मेरे पास मैंने जूते ये वाले पहने हुए हों और मेरे बैकग्राउंड में ये वाली स्पेसिफिक गाड़ी नजर आए, AI cannot do that. Not yet. तो मैं वही ना, अब जब करेगा तो हम फिर पिवट कर जाएंगे। अभी AI की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। That being said, AI can aid you in a lot of processes जो कि पहले मतलब ये कि बहुत ज़्यादा खुद बनाने। For example, let's say मैं तुम्हारे artwork बनाता हूँ and then the background I generate from AI. You won't be able to tell. Obviously, अगर एक नया बंदा है तो वो ऐसा बनाएगा कि आपको लगेगा कि अबे ये तो तूने AI से बनाया। Somebody who understands how to do prompts and actual prompts. So basically, what I will do is I will feed my art to Midjourney, and then I will make Midjourney create stuff off of my art. So when it creates stuff, वो बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे मैंने ही बनाया। ठीक है, तो वो उसकी merging बड़ी आसान हो जाएगी with what I've already created. तो अब बहुत सारी चीजें ना
And again, I don't think everyone's thinking like that because I've seen people who are still trying to go the old traditional way कि ऐसे ऐसे बनाएंगे वैसे वैसे बनाएंगे. It's a great tool. Yeah. And process. भाई मुझे तो लगता है कि it's a fucking weapon. Yeah. And At this point, you can use it to like your strength. But लोग डरे हुए हमारी jobs ले लेगा. Not really. No, I think मतलब it's like you bringing a gun to a sword fight. Yeah. मैं अभी तक बिल्कुल ऐसे ही. and you're just like, dude, this is nothing. हो right? सकता है अगले 10 साल में ले ले. हाँ. हो सकता है ले ले. But 10 साल किसने देखे हैं ब्रो? अभी तो नहीं ले रहा ना, तो बस अभी की सोचते हैं ना. What makes you this quick, do you think? I really wonder sometimes कि इतनी सारी pivoting, all of this pivoting, because because you must be anchored in something. नहीं तो don't you feel like a ship in a stormy sea if you pivot this much? यार, so मेरा ना जो आई थिंक एंकर है वो फाइनेंशियल एंकर है. सो लेट्स से मेरा एक फाइनेंशियल गोल है. 10 साल पहले मैंने अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाया कि लेट्स से भाई मुझे हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स चाहिए. ठीक है. अब वो कैसे चाहिए ये मुझे नहीं पता. बट व्हाटएवर गेट्स मी देयर फास्टर आई एम जस्ट गोना जंप टू दैट. आई डोंट केयर कि वो मुझे तुम अभी इफ यू टेल मी कि गड्ढा खोद दो और $1 मिलियन ले लो, मैं गड्ढा खोद दूंगा. क्यों नहीं खोदूं? इट्स $1 मिलियन. इट जस्ट गेट्स मी क्लोजर टू माय मार्क, राइट? क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ चीजें करनी है जो अभी नहीं हो सकती. तो वो जब तक फाइनेंशियल गोल हिट नहीं होगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ जो मैंने सोची हुई है कि ये एक बनाना है, वो बनाना है, वो नहीं हो सकती. उससे पहले जो भी मुझे वहां तक लेकर जा रहा है, एंड एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉयिंग दैट प्रोसेस, क्या मसला. एंड द थिंग इज, मैं कभी भी एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट 10 years, none of that gets discarded for good. Everything gets put on a shelf until there's a better time to bring it back. और वही है ना कि आर्सेनल बढ़ता जा रहा है, तुम छुरी लेके खड़े हुए हो, मेरे पास पूरी आर्टिलरी है, मैं ये भी निकाल सकता हूँ, वो भी निकाल सकता हूँ. और जहां भी मुझे लगेगा, अब जैसे कैरिकेचर शॉप 2 साल से बंद पड़ा हुआ था. आई हैवंट posted in 780 days on my Facebook page. But I know for a fact कि 1 महीने के अंदर it's going to be up and running again. That's interesting. See, so that completely reworks the question that I asked you. I asked you, आपको बुरा नहीं लगता अगर आप pivot करते हैं तो आप चीजें छोड़ते, you're leaving things behind. You're saying you're not leaving anything behind. I don't leave anything behind. But it's always there. It's always, and I'm always thinking कि अच्छा वो जो मैंने चीज सोची थी, because दिल लगा के सोची थी भाई, टाइम लगा के सोची थी, एक्चुअल मतलब शौक से सोची थी, तो व्हाई डिस्कार्ड इट? इट विल ऑलवेज बी, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो जाएगी. तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है. That's fantastic. That is truly fantastic. कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है. This is not a segue at all, but I did want to ask you this also. There's mass exodus. People are leaving in droves, and skilled log, by the way. Right? Not saying कि इंसान तो इंसान होता है, but skilled लोग जा रहे हैं. What do you make of that? And what do you think these decisions are made in haste? Yeah, so I've left. But you've been planning on leaving for years. I know, but it's जो मेरी reasons हैं वही reasons अब लोगों को नजर आ रही हैं. मुझे probably शायद 3 साल पहले नजर आ गई थी. Okay. ठीक है. तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो गलत decision है. देखो यार, I think, and I've seen podcasters and people kind of just shitting on people who are leaving कि क्यों जा रहे हैं. और ठीक है भाई, आपको रहना है आप रहें, बट लाइक पहली बात तो ये कि जिसको जाने जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए, आप सबकी अपनी रीजनिंग होती है. बट जो लोग जा रहे हैं, आई जस्ट फील कि they're just going for a better life and that's okay. Yeah, मजबूरी है यार. But what I'm saying is, do you think it's an informed decision though? I think कि अब ये तो खैर डेटा सेट नहीं है हमारे पास. Like for example, if you and I were talking constantly and if you were leaving, तो फिर मैं बोलता कि भाई अच्छा informed decision है या नहीं है, या हेस्ट में हो रहा है. I think लोग सोच कर ही जाते हैं यार. और नहीं, और मैंने तो अपने हिस्ट्री में, अपनी मतलब पास्ट में एक्सपीरियंस के अंदर जितना भी देखा है, जब भी सेटिंग हो जाती है यार, अल्लाह ताला जब लेकर जाता है तो अल्लाह ताला ने रिस्क उधर लिखा हुआ है, रिस्क ही उसको लेकर जा रहा है. नहीं लिखा होगा तो वापस आ जाएगा, और लिखा हुआ है तो वो इन्फॉर्म्ड हो या हेस्टी डिसीजन हो, इवेंचुअली वो उस पटरी के ऊपर आ ही जाएगा. सही है. तो बट आई थिंक लोग सही कर रहे हैं. You think लोग सही कर रहे हैं by leaving? Yeah. As sad as it is, यार उसकी वजह ये है कि मैं अभी सिक्योरिटी के मसले हटा देता हूँ. ठीक है. मैं हमारे इकोनॉमिक जो हालात है उसके मसले हटा देता हूँ. मेरा जो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम पाकिस्तान से हमेशा से रहा है वो ये रहा है कि
it's very hard to flourish as an individual in Pakistan because आपके around ecosystems नहीं बने हुए creative. So for example, हम podcasters हैं. हाँ. क्या है podcasting के अंदर पाकिस्तान के अंदर? आप कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? इस बार को कहाँ तक पुश करोगे? ठीक है. एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है? आर्टिस्ट डिजिटल आर्ट कम्युनिटी है. जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से बाहर के प्रोजेक्ट्स पे कमा रहे हैं. तो यहाँ पे तो कुछ बिल्डिंग नहीं हो रही. यहाँ आप तो बेसिकली चीप लेबर हो ना. सो आपको लगता है कि वो कम्युनिटी है और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. नो ब्रो, you're basically selling yourself short. वो आपका फायदा उठा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली एक और चीज में इंटरेस्टिंग है, जो बाहर का प्रोजेक्ट भी मिलता है यहाँ पे, वो भी इसीलिए मिलता है बिकॉज हमारे रेट्स फिर भी सस्ते हैं. विदाउट नहीं, वी स्टिल गुड, वी आर गुड, राइट, बट वी आर गुड कंपैरेटिव टू देम. लेकिन उनके रेट्स बहुत ज्यादा हैं बिकॉज दे लाइक वी वांट टू बी पेड व्हाट वी वर्थ. यहाँ पे वैसा नहीं है. तो आई थिंक वो encouraging communities नहीं है, वो ecosystem नहीं है. और ये मतलब मैं लोगों का मसला नहीं है, ये ऊपर से आता है. ये हुकूमतें बनाती हैं ये सारे ecosystems. For example, इंडोनेशिया के अंदर art culture is thriving. तो वो बनाया हुआ है ना, आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, पैसा लगता है, इवेंट्स होते हैं, मतलब और फिर अपॉर्चुनिटीज होती हैं. ये नहीं है कि आप आर्टिस्ट हैं तो अब मैं क्या करूं. हाँ. मैं आर्टिस्ट बन गया तो अब मैं क्या करूं. कुछ है ही नहीं, कोई खपत नहीं है. तो आई फील के और ये तो सिर्फ मैं एक आर्ट की फील्ड की बात कर रहा हूँ. टेक की फील्ड की बात कर लें. अभी स्टार्टअप्स आए थे, बंद करके भाग गए सारे. ठीक है, सब बंद हो रहा है, सारे ब्रांड्स जा रहे हैं. रामेश भाई, वही जो वर्च्यू सिग्नलिंग वाला मसला है ना, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वाज जस्ट कंफ्यूज्ड बाय द लैंग्वेज. जैसे वन ऑफ द थिंग्स आई नो, दिस इज अ बज़वर्ड फॉर यू, सीड फंडिंग, राइट. हमने जो है इतनी फला सीड फंडिंग वो कर ली है, सीड फंडिंग हमने रेज कर ली है. That literally means I've taken someone else's money. It's fucking debt, bro. Exactly. People कोई proud moment नहीं होना चाहिए. People are so confused. किस बात पे मैं किस बात पे छोड़ा हो रहा हूँ बेसिकली, कि मैंने किसी को अपना आइडिया पिच किया और उसने बोला हाँ मैं ये आइडिया लगा दूंगा, पैसे लगा दूंगा तुम्हारे आइडिया के ऊपर, और फिर तुम मुझे जो है पैसे वापस कर देना. What are we celebrating here, dude? Why are we cutting this cake? This means... Sorry to cut you. Yeah, please. ये दुनिया के मुल्कों, मतलब अलग अलग मुल्कों में होता है. And then things are built. Great things are built. Otherwise there are consequences. Yeah. If things are not built, so those people then come for their money. They're like, हाँ भाई, क्या सीन है, क्या सिस्टम है? Because then they ask for equity in your business. Yeah. अजीब यहाँ पे. This is the other thing ना, नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला है खतरा है ईमान. I think partial understanding of whatever is going on. NFT भी जैसे है. I'm sure people must have come up to you and all like, NFT collection बना दो हमारी. Yeah. Do you know what an NFT? Do you know what it is? Or do you understand the concept? Or even crypto? हम crypto में जो है मुझे किस चीज में invest करना चाहिए? यार ये the philosophy of crypto though. Do you know the philosophy? I hate that. रामेश भाई, कौन से coin में invest करूं? Okay, but understand. क्या करूं? कैसे? अब मुझे बस आप DM में crypto का बता दें कि क्या होता है. Dude. हाँ. नहीं. ऐसे नहीं होता. But sorry, before we lose that chain of thought, that's why I think it's okay to leave Pakistan. Yeah. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा, जो कि मैं अपने followers को भी बोलता हूँ. I feel like एक certain privilege अगर आपके पास है, for example, you're a freelancer. Yeah. And you're earning in dollars. आपको तो फौरन बाहर निकल जाना चाहिए. That's what I was going to say. That's the other thing. Yeah. ठीक है. Yeah. आप क्रिप्टो में पैसा बना रहे हो, आप निकल जाओ फौरन. Yeah. जॉब पेशा लोगों के लिए मुश्किल होती है. एंड आई ऑल्सो फील कि उनको फोमो भी बहुत होता है कि यार सब छोड़ के जा रहे हैं. विच इज़ वाई पिछले कुछ 2 साल से आई बीन रीचिंग माई एस ऑफ कि भाई उन जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो टाइम जहाँ से आप डॉलर्स के अंदर बेसिकली कमाना शुरू कर दें. आपकी बेसिकली वो जो होता है ना सेल्फ सस्टेनेबल आपके सेटअप्स बन जाएं. यू डोंट हैव टू गो. मैं नौकरियों के साथ कोई बुरा नहीं है. आई नेवर से कि नौकरी जॉब्स आर बैड, बट jobs won't get you there at all. Mm-hmm. You know, if you're thinking कि यार मुझे let's say $1 लाख बनाने और आप एक 9 to 5 normal job करते हैं, $1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है एक 9 to 5 job से, unless you're like some CEO level shit. And then your CEO, then is that really a job? Is that 9 to 5? वही ना, it's not right. तो आई फील कि इस वक्त लोगों को डिजिटल स्किल्स जितने भी दुनिया के अंदर चीज़ें पॉपअप हो रही हैं, कंटेंट क्रिएशन है यार. कंटेंट क्रिएशन मेक्स ग्रेट मनी. ऑब्वियसली इफ यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एक यूट्यूब चैनल बना लेंगे उससे तो शायद ना बने. हाँ. बट कंटेंट क्रिएशन में और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक जैसे? है. अच्छा, जैसे कि आई नो 2 guys डायरेक्ट जिनसे भी मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर टेक्स्ट बेस्ड चैनल्स बनाए हैं.
ओके ठीक है, कंटेंट बहुत सॉलिड है, हाँ बेसिकली हिस्टोरिकल स्टोरीज बता रहे हैं वो, और बहुत मतलब एनिमेशन वगैरह हुई हुई होती है, सब बहुत है, उनकी शक्ल फेसलेस चैनल है हाँ बेसिकली, हाँ ठीक है, हाँ रेकिंग इन मनी बिकॉज वो उस पे अमेरिका का उस पे और कनाडा वगैरह का बेसिकली सीपीएम आता है, वो उन मार्केट्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, ना खुद कैमरे के सामने बैठना पड़ता है, और उन्होंने वो खुद भी नहीं करते, उन्होंने 4 एडिटर रखे हुए हैं जिनका सुबह शाम काम है भाई कहानी निकालो, उसके ऊपर पूरी स्क्रिप्ट लिखो, वो चैट जीपीटी लिख देता है, उसमें छोटी मोटी चीजें करनी है, उसके बाद विजुअल्स जनरेट करना है, ये एनिमेट करना है, वो एनिमेट करना है भाई, फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ गाजा की उन्होंने पूरी एक स्टोरी बता दी, एक हाइपोथेटिकल फेंक हाँ रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसी तरीके फिर मेडिकल साइंस के अंदर है, हॉरर फिक्शन है, हॉरर ट्रू स्टोरीज हैं, क्राइम स्टोरीज हैं, फेसलेस शिट, कुछ नहीं, हमारी तरह सुबह शाम बैठ के कैमरे के सामने बैठ के या मजदूरी नहीं करनी और पैसे कमा रहे हैं, ये तो अगेन एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, वन लिटिल फिर एग्जांपल इसी के अंदर भाई अब फॉर एक बन गया आपका, यू पीपल आर सेलिंग दीज चैनल्स टू अदर पीपल एज वेल, कि भाई या आपको ही करना है, आप पैसा लगा दो, हाँ आप हमें इन्वेस्ट कर दो, हम आपके लिए पूरा चैनल बिल्ड कर देंगे, बाद में परसेंटेज पे होता रहेगा, जितना चलता रहेगा, जो है हम आप कहानियां लेकर आ जाओ फॉर एग्जांपल, हम सारा काम कर देते हैं, वो धंधा चल रहा है। हाँ तो ऐसी जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, बहुत सारी चीजें हैं यार, और मैं तो खैर अगेन यूट्यूब पे बोल बोल के थक गया हूँ मगर जिसको करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं करना भाई वो ही बैठ के हेट कर रहा है कि नहीं आप तो, आपके लिए तो बड़ा आसान है पाकिस्तान से हाँ बाहर आपके लिए तो जाना। बोलना आसान है आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स स्टिल आई कम बैक टू दिस इज एट दिस पॉइंट इट्स अ डेड हॉर्स दैट आई एम बीटिंग लेकिन आई थिंक इस सब काम के लिए ये लाजमी है कि यू एटलीस्ट ऑन योर फीट Yeah, and you're moving about and you're nimble you're like yeah if this is the direction we'll take this direction yeah. if this is not we'll take another direction I think yeah I don't it doesn't make me happy to say this but agar aap aise if you put it like that I can't disagree with you हाँ अगर जा रहे हैं तो सही कर रहे हैं it's their life ना और यार बाहर के मैंने भी जिन 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 जगहों पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी नर्चरिंग कम्युनिटीज़ हैं एज़ अ क्रिएटिव। हम तो क्रिएटिव की बात करेंगे, और तो मुझे नहीं पता इंडस्ट्रीज़ का, बट आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, जो आइडिया जनरेशंस होती हैं, फिर अच्छा ये नहीं है यहाँ पे तो होता है ना हाँ करेंगे, आई फकिंग हेट दैट। ये जो लफ्ज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, हाँ करेंगे, yeah करेंगे यार, करना है, देखते हैं करना है, देखते हैं देखते हैं, हाँ फकिंग हेट दैट। वहाँ ये नहीं होता भाई, बट ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए टूल्स है ना आपके पास, आपने एक चीज़ सोची, अच्छा भाई कर ली, ठीक है, हो गया, फिर कुछ बन गया। तो वो मैंने बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, yeah जिधर भी मैं रहा हूँ, कि कम्युनिटीज़ कन्वर्ट होती हैं। यहाँ पे आप ढाबे पे बैठ के सिर्फ बातें चोते हो, और Hmm. there's no conversion I to think anything. I think that's I think what you're highlighting there is very important and it's interesting. Okay, we'll always look at the individual who does well. Like for Yeah, instance, if you're doing well, we'll be like, why don't you help more people? Yeah, it's not that I'm not helping people. It's just pehli baat to, it's not that I'm not helping people. It's just that you don't see it. yeah, Dusra, there needs to be a framework. Na, I can't build a framework by myself. yeah. Like at You least I need can, one other नहीं, person or बिल्कुल, 5 other absolutely, people, absolutely. right? Because no one else willing to put their skin in the game, Yeah, right? yeah. So they're just like, hey, हाँ यार ये you should definitely do this. I should definitely do this, but why shouldn't you definitely help me? अब ये मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है बोलते हुए कि यार यूट्यूबर्स का हाल बड़ा बुरा है, बेहतर होना चाहिए, एंड देन दे वर्क इन एजेंसीज जो यूट्यूबर्स को पैसे नहीं दे रही। Yeah. फक यू देन, मतलब कैसे हाल बेहतर होगा? वो इकोसिस्टम नहीं है ना यार, वो है ही नहीं वो। और यार आई थिंक शायद माज सफदर और नादिर अली मेरी नज़र में डायरेक्ट जो लोग हैं, इन दोनों के अलावा बड़े पैसे मेरे ख्याल से यूट्यूब से कोई भी नहीं कमा रहा। बड़े पैसे तो नहीं बड़े कमा पैसे रहे नहीं, हाँ मतलब I think Ducky is in that ओह conversation या also सॉरी डकी एज वेल, या because they put in daily का कोई सीन है हाँ, ना और उनका वो एक्सेप्शन है। हाँ you're not gonna become that यू नॉट गोना बिकम दैट, yeah बट होना यही चाहिए ना कि यार अब हमारे पास अगर 3 ऐसे बंदे हैं, तो हमारे पास अगर 300 बंदे ऐसे होते जो पाकिस्तान से कुत्ते की तरह पैसे कमा रहे होते, तो हम बोलते अच्छा ठीक है यार, वो सेटअप है, हाँ ब्रांड्स पैसा लगा रहे हैं, आपकी एड कन्वर्जन जो है वो उस तरीके की है, स्पॉन्सरशिप बड़ी क्रेजी मिलती हाँ है, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है नहीं है तभी नहीं कमा रहे ना। ऐसा कुछ भी तो नहीं है बस तो फिर क्या, क्यों यार मैंने इसीलिए दूसरे मुल्कों में अब चैनल्स खोलना शुरू कर दिए हैं, yeah बिकॉज एज मच एज आई लव डूइंग दिस फॉर पाकिस्तानी पीपल, बट एक रियलिटी भी तो देखनी है ना। yeah I think the confusion is always कि if you're leaving Pakistan, that means you're giving up and you hate नो नो Pakistan. नो, I think that is the furthest thing from the truth. या आप नहीं देखते हो मुड़ के कि वो जो बंदा है जिसको आप ये बात बोल रहे हो उसको कितना बुरा लग रहा है या या for leaving or for या having to leave and all those things. Do you know what I mean? अच्छा मुझे तो भाई आई लव डूइंग दिस फॉर पाकिस्तानी बॉयज। लड़कियों को मैं इसलिए नहीं बोलता बिकॉज आई डोंट रिप्रेजेंट
that demographic हैं जितनी हैं, thank you for the support. मगर ये कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है यार जब मैं लड़कों को देखता हूँ जिस हालत में स्ट्रगल कर रहे हैं, 14 साल 15 साल 16 साल से ही टेंशनें शुरू हो गई, बाल सफ़ेद हो रहे हैं कि क्या करें यार, घर के मसले हैं. एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दिस रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई एम इन द वर्ल्ड. इंशाल्लाह. और ये जो मैंने आई ऑल्सो फील कि पाकिस्तानी चैनल से जो मैंने रेवेन्यू खींचने वाली चीज़ अपनी लाइफ से हटा दी, खैर कभी बना ही नहीं माशाल्लाह, तो नेवर रिलाइड ऑन इट. There was nothing to rely on. बट जब वो अब एक वो होप भी जब हटा दी है ना, तो अब आई फील कि मैं बहुत खुले दिल से और बहुत ऑनेस्टली और ओपनली बता रहा हूँ लोगों को चीज़ें, और बताता रहूँगा. एंड I'll whatever जो भी नई चीज़ मैं करूँगा, मैं बोलूँगा भाई इस तरह करिए, मैंने आप भी कर लें. Or this won't stop. It doesn't matter where I live in the world. This will continue unless I hit a certain financial goal, and then I'm deleting everything. Then you're going. I'm just going off the radar. Yeah. That's okay. All right. Oh, I wonder what that goal is. Allah Rahim kare. But ये आपने बात की अभी कि it hurts you to see people struggling. I think एक बात कहने की ज़रूरत है यहाँ पे कि we don't necessarily make enough room for young men and young boys and young girls and young women to mess up. There's no conversation. There's no conversation. Did you know? Did you know herpes, which is a sexually transmitted disease? It's basically endemic in Pakistan. Like most people have it. What? Yeah. What? But we don't have sex in Pakistan. So how is this happening? Yeah. Because wait, उसके दो वो होते हैं variants. There's 1 and 2. 2 is 1 is basically passed down. I think वो कैसे normal तरीकों से. 2 I think is passed down through sexual intercourse. Yeah. तो 1 है या simplex 1 है 2? 2 है. Yeah. Holy shit! How? Yeah. Bro, because listen, वही वाली बात है ना, आप taboo कर देते हो. Taboo कर देते हो, and so and I don't have the exact numbers. Don't quote me on this, but it's endemic basically कि every 5th या ऐसा कोई सीन है, every 8th या 9th ऐसा कोई सीन है कि people have it, right? Because people are having sex, right? But because we don't want to have conversations around sex, we obviously, अगर वो चीज़ होनी नहीं है, तो how are we going to talk about sexually transmitted diseases? How are we going to talk about consent? How are we going to talk about preventions? And how are we going to talk, none of those things, because वो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हो रही है. Bro, HPV में मैंने एक वीडियो बनाई थी. HPV is the human papilloma virus. Yeah, आपने बनाई थी, yeah. Which scared is the crap one out of of me. It's the biggest cause of cervical cancer in women. Oh my God. ठीक है. Yeah. And पाकिस्तान के numbers हैं, अच्छे खासे numbers हैं, ठीक है. Nobody knows about HPV. And to the extent that Aga Khan, उसका सबसे simple तरीका है वैक्सीन. एक वैक्सीन होती है Gardasil के नाम से. You get 3 shots. You're basically उसके बहुत I think 160 170 variants हैं, ठीक है. और वो बहुत सारे types के, मतलब हाथों वाले भी हैं, plantar warts हो जाते हैं, पाँव वाले भी हैं, बहुत सारे versions हैं, ठीक है. But जो सबसे खतरनाक है, which is the cancer causing strain जो होता है, ये वैक्सीन उसके खिलाफ अच्छे, मतलब I think 90s के अंदर 90s की percentage के अंदर protection दे देती है. ठीक है. बाहर के मुल्कों में जैसे ही बच्चियां, लड़कियां और लड़के जो हैं वो आई थिंक बालिग उम्र में होते हैं, आई थिंक बल्कि उससे भी पहले, वहाँ तो बहुत पहले वो बालिग नंबर जो बहुत पहले पुल हो गया. तो आई थिंक 12 या शायद 13 साल की उम्र के अंदर स्कूल्स के अंदर वैक्सीन लग जाती हैं, मैंडेटोरी हैं पूरी दुनिया के अंदर. पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है वैक्सीन. आप अगर आगा खान कॉल करेंगे ना, सो मैंने जब वो वीडियो बनाई थी तो मैं पूरी वो रिसर्च करता, मैंने कॉल आगा खान, ऐसे जरा पता तो करूँ कि मैं हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि भाई अगर मिल रही हो तो मैं उस वीडियो में बोल दूं कि भाई आगा खान से जाके लगवाएं. They were like 6 महीने से वैक्सीन ही नहीं आई सर. It's not their fault. It's not their fault. जिसका भी मसला है, but like dude, it's the biggest cause of cervical cancer in women. और मर जाती हैं औरतें. और वो ये सर्वाइकल कैंसर ऐसा होता है बिकॉज इसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो पैप स्मीयर्स के थ्रू होती है. पैप स्मीयर भी नहीं कराती हैं औरतें, ठीक है. पाकिस्तान में ये है ही नहीं कि पैप स्मीयर कराना है हर 4 साल बाद 3 साल बाद, बिकॉज हम एक्टिव ही नहीं है. तो पैप स्मीयर नहीं हो रहा. वो उस वक्त पता चलता है जब वो ऑलरेडी स्टेज 4 पर होता है. एंड देन देयर इज नो, ऑफ कोर्स एंड इट्स द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑल इट नीड्स इज अ फकिंग जैब. 6 महीने में 3 जैब्स लगते हैं, यू आर गुड टू गो. So, हम बात ही नहीं कर सकते. Dude, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी काजी, you have no idea कि मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस किए कि यार we're already like active,
what do we do? हम कैसे करें ये? अब we're scared. What if हम किसी शादी हो हमारी हो उसको ये हो? मतलब जाहिर है possibilities तो है ना. और यूएस में तो खैर इसके रेट आई थिंक हर चौथे बंदे को वही जिस तरह हर्पीज वाला है, हर चौथे या पांचवें बंदे को HPV है. एंड इट्स सेड दैट इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव इवन वंस यू विल गेट HPV एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. यूजुअली होता ये है कि 2 साल के टाइम स्पैन में आपकी बॉडी खुद क्लियर आउट कर देती है. बट सम पीपल उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उस तरीके से होता है कि इट लिंगर्स अराउंड 10-20 साल तक बैठा रहता है वो. एंड देन इट बेसिकली मैनिफेस्ट्स इनटू सर्वाइकल कैंसर फॉर वुमेन. सही है. Nobody's talking about this shit. और औरतें मर रही हैं पाकिस्तान में. This is true. Bro, पता नहीं, मुझे नहीं समझ, वही ना रामेश भाई, मुझे समझ ही नहीं आता है कि हम किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं. उनकी जान जा रही है, हम बोल रहे हैं लेकिन बात ना करो इस चीज़ की. किस चीज़ के बारे में बात ना करें यार? ये वही वाली बात है ना, या तो पूरी तरीके से उनको एजुकेट करो एंड देन ट्रस्ट देम टू मेक द राइट डिसीजन, व्हाटएवर यू थिंक द राइट डिसीजन इज, वो भी नहीं करना. I think this is where the disconnect actually is. I think वही जो आपने बोला nurturing communities. I think nurturing communities come from nurturing people. Yeah. I think we don't nurture. Absolutely. We don't nurture our kids. We don't want to talk to them. पैसे फेंक देते हैं उनके ऊपर, हाँ भाई ठीक है ये ले पैसे ले. Even जो privilege की बात हो रही है, right? Why do you think तो अगर इन लोगों के पास privilege है, why do you think they're miserable? Yeah. That makes no sense. Yeah. So if everything that you want is everything that this guy has or this girl has, why are they miserable then? Do you think? Because again, there's no पहली बात meaning in their life, and there isn't actually any nurturing. No one really cares. बेकदरी, you know. Yeah. Which is why बाहर जाना बेहतर है. Allah रहम करेगा. I think as sad as this is for me to say. Yeah. You know what's ridiculous though, in terms of nurturing and in terms of, again, people's inability to pivot. I've not seen any good content creation around how to go about. ये मैं आइडियाज देता रहता हूँ, खुद मैंने कुछ नहीं करना है. Say, but how to go about moving to Canada, for instance. Yeah. नहीं actually है इस पे. कौन है? I don't, मतलब कंटेंट तो है एजेंसीज की तरफ से, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाता. हाँ, जो स्टेप बाय स्टेप का है ना, प्रॉपर जिस तरीके से आपने बाइनेंस के लिए किया था, राइट? इफ समवन जस्ट हैड दैट कि भाई इतना टाइम लगेगा, बांध लो एंड देन ये चीजें करनी है. There's just nothing. दुबई के लिए बाय द वे मैं बना रहा हूँ ये ऑलरेडी. या मैंने पिछले महीने ही अनाउंस कर दिया था कि यार मैं व्हेन आई कम बैक टू पाकिस्तान आई एम गोना मेक दिस सीरीज. तो अभी प्रॉब्ली अगले हफ्ते पूरी सीरीज बन जाएगी कि इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, how can you move to Dubai? If you're somebody who wants to set up a company, how can you move to Dubai? If you're someone who has X amount of money and you want to move your business to Dubai, this is how you move to Dubai. तो मैंने वहाँ पे बंदा भी अपना, तो मैं तो भाई अपने तक जो करूँगा. Of course. Yeah. So yeah, मगर हाँ करना तो जो जा रहे हैं वो फिर नहीं चाहते ना कि और लोग आए. You see that, dude? You see, isn't that exactly what our problem is? Yes. कि हमें, we want to swim to shore. Yeah. But we don't want the other people because we think that'll be too many mouths to feed. What we don't again understand is we were promised risk by the infinite king, right? नहीं कम होगा, आप जितने भी कमा लो, मेरी रिस्क में कमी नहीं आ सकती इस तरीके से. यार क्या बात की आपने. That's so true. I think when we moved to Canada, ना, again privilege की बात, alhamdulillah, when we moved to Canada, my mother had no requirements, ठीक है, कहीं पे भी just safe or regular requirements होती, safety, security, safety. My father had one extra requirement, one. And he was like, okay, please we don't want to move to a neighborhood which is predominantly Pakistani. Right? And ये हम जो होते हैं ना, woke जो बच्चे होते हैं, उस वक्त I think I must have been 23, मैं बोलता हूँ बाबा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मुझे अपने लोगों से प्यार है. He's now like, you understand. He's like, no, it's not even just that. He's like, dude, I'm going to be going back and working in Pakistan. You're going to be living here. Right? So pehli baat, don't even preach to me, right? Dusri cheez, it's not about love. I love my people. I don't care if you go hang out with them all day. But I think उनकी कुछ खसलतें होती हैं, कुछ nature होती है उनकी कुछ, in terms of how they manage their neighborhood, which I just prefer an Italian neighborhood. I just prefer maybe even a Serbian, if they don't hate the fact that you're Muslims, maybe even a Serbian neighborhood. I prefer a Jamaican neighborhood. where वो neighborhood की पूरी की ownership लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं. You know, Pakistanis वहाँ पे भी जो होते हैं, जहाँ तक लॉ फॉलो करने की बात है, दे फॉलो द लॉ, बट दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे दीज अदर कल्चर्स टेक. ये रोड क्यों नहीं बना, ये हमारा रोड है,
You know, it doesn't matter अगर मेरे बच्चे नहीं हैं और बच्चे सिर्फ काजी के हैं. Yeah. ये रोड हमारा है और उसके बच्चे खेलेंगे इस पे. You know, there's no responsibility from the Pakistanis. Sense of community नहीं है ना, like I said earlier, कि वो communities बनी इसीलिए नहीं because I don't know, खैर कराची से बाहर का मुझे नहीं पता. कराची के अंदर it's a cutthroat city, man. Nobody wants to make a community. Nobody wants to be a part of like a larger group. And अगर वो है भी तो वो फिर बड़ा selfish reasons की वजह से. And if the opportunity is provided, that person will step on the group and 100% run for the hills. I think insular है ना, वही ना, आप जो है you'll see your minority communities and everyone's basically, people don't understand, everyone in the end becomes a minority if you keep dividing like that, right? तो आप everyone religious बुनियाद पे या linguistic बुनियाद पे हर कोई अपनी छोटी छोटी communities में रहते हैं, insular होते हैं, शादियां भी उन्हीं के अंदर होंगी. तो फिर हाँ ठीक है ना, फिर then we're not one cohesive whole. We're not. So then obviously everyone's going to cut and run. What sect तो नहीं, religiously नहीं पूछ रहा हूँ, but what cultural divide do you ascribe to? Do you think? What are you? Yeah, that's a different. What do you mean? What am I? What are you? Sunni. No. By default, I guess. Religious नहीं. फिर? But like in terms of Pakistan में, what group do you identify with? Like Mahajir. पे नहीं यार. I mean, what group, man? Like you have to take like groups. Okay. बहुत मैं groups का ही नाम ले रहा हूँ. I don't know. Muhajir खैर हाँ, people say that Muhajir. So socioeconomically middle class, Urdu speaking, Sunni. That's you. Mahajir, Urdu speaking. You like Muhajir as a No, word? I don't. I don't like any of these terms. But like तुमने पूछा है तो मैं वो It's interesting, categorically बता रहा हूँ. Sunni by default. Okay. यार वो क्लास वाली बात मैं नहीं बोलूंगा because लोग बोलते हैं कि यार flex है. But हाँ, I mean we started as super middle, and then we worked our way up, and then we're alhamdulillah very very good. But I don't really, यार मैं honestly speaking, मेरा जो घर है ना वो बहुत छोटा सा है, in the sense कि मतलब मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, and हम लोग बड़ा इन सारी चीज़ों से ना बड़ा disconnected हैं. We don't. This is why I am who I am, is because my parents are like that. वो नहीं सोचते इस तरीके से. No, but that's exactly what the point I was trying to make was, if I just put down on your paper, on a paper, Ramish Safa, Urdu speaking, Sunni, man. Profile बन रही है first. And then also Muhajir. Yeah. That doesn't do anything to describe you. Yeah. Do you understand? Yeah. And so what I'm trying to say is, it doesn't do anything to describe anyone. Yeah. This is not who you are. Yeah. You choose who you are. Yeah, absolutely. You know? Absolutely. और ये groups जो हैं इन बुनियाद पे convenience किसी और को देने के लिए बनाए गए हैं. Absolutely. People need to understand that. You know, it's not about you. It's not about your identity. Your identity is something far greater than this. You are meant to be far greater than this. I also think when you achieve a certain amount of stuff in your life, कुछ भी हो भले हो, पैसे हो, status हो, fame हो, again, this is how I think. I think you should be beyond this, because then that's what gives you identity at a certain point when you're a nobody, right? मैं महाजिर हूँ. But then if you're a content creator, you're a content creator, bro. Yeah. You know, then सही है महाजिर वो. Then you start shedding those parts of your skin. I think that's super interesting. That's super interesting. आप देखो, think about what you're saying though. You're saying कि ये लोग भी gravitate इसीलिए करते हैं because they have nothing else going identity on. है ना, identity के लिए, and everyone is looking for that. मजबूरी है. You want to belong, you want to be represented in a certain way. But then if you're अब आप एक certain आप CEO बन गए तो nobody would be like, oh महाजिर CEO जा रहा है. CEO साहब है भाई. People can still manage. People can, but वो खुद नहीं बोलेगा कि मैं असलम खान महाजिर CEO. It's fucking CEO. Yeah. तो I also think कि ये चीज़ें sense of purpose के लिए बनाई गई हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है. And we should just try, which is why I think हम लोग इतने पीछे हैं, because हमारे लिए sense of purpose इन्हीं चीज़ों में रह गया है कि बस ये गली के अंदर मैं महाजिर किंग हूँ और अशरफ पटारी और ये वाला वो साजिद शिकारी whatever. But we need to be bigger than this shit, man. Other things can represent you and can basically define who you are. Yeah. How do you become bigger than this?
work. Step by step. Put in the work, man. Just work. Yeah, just work. अब ये work का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो बस काम 9 to 5 से वाली करें. I think just यार I think ये भी खैर हर किसी का definition अलग ही होता है कि कितना बड़ा होना है, कितना कहाँ तक जाना है, क्या करना है. But keep educating yourself. Keep trying to become a better version of yourselves. इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस्लामिक नहीं भी हैं तो अगर आप सोचें तो वो एक ऑब्जेक्टिवली सोचें तो वो बहुत एक अच्छा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है एक अच्छा इंसान बनने का एंड एक अच्छा मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनने का. और इस्लाम में बाय द वे सारी चीज़ें हैं. कायली का बुरा बोला गया है, काम पे जाने को बोला गया है, हिजरत करने को बोला गया है, पढ़ने को बोला गया है. These are all of it is in the books, man. Listen, man, if you're praying 5 times a day, how are you lazy? I don't understand. You can't be, right? तो वो जो खैर वो जो आर्केटाइप है ना कि वो हजरत होते हैं, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, but he has this big tone. It doesn't make sense if you're doing it properly. Like, it can't happen like that. I just feel कि वो by extension of that discipline, there's a lot of stuff that you need to put in your life, and then people don't do that. Yeah. Which is why पीछे हैं. खैर, तुम्हें जल्दी तो नहीं, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है. नहीं, प्लीज, मैं तो आपके साथ हूँ. हाँ, तो जल्दी. अब तुमने मुझसे तो बहुत सारी चीजें पूछ ली. अब let's okay. turning the tables. क्या प्लान है? किस चीज का? बस generally, what's the plan with this? I'm very curious to know कि podcast का क्या प्लान है. पाकिस्तान में if you're staying, what's the plan in Pakistan? How are you? What's the plan in your career? Life का plan क्या है? I think ये हमारी बात बहुत अरसे से नहीं हुई है. I would have loved to do this off air, but if हो गया. नहीं, हम काट सकते हैं. नहीं, it's fantastic. I think एक जो one of the interesting things that happens with you and me is, even though we adhere to all the same principles, so you've not said anything in this whole podcast that I disagree with. Yeah. Right? I think we are also, there could not be two people who are more diametrically opposed. With basically a juxtaposition. If you and I were sitting at a table, हर आप चीज़ जो बोल रहे हो ना कि if you're like कि यार ये मुझे जो है देखते हैं बुरा लगता है, that is my तकिया कलाम. हाँ, देखते हैं ना. Bro, I know. चेक करते हैं. You know, of course you know, right? देखते हैं. What the plan is to give it one proper go, content creation. And if that doesn't work out, Allah Rahm karega, to phir then to do something else. But while doing content creation, the plan is also to move into some other things, some on digital assets, develop some things. I spoke about the writing workshops, but really just expand and now not understand money to be a bad thing anymore. Yeah. Right? And figure finally, right? क्योंकि अभी तक जो है मैं ख्वाबों पे पल रहा था और मेरा खाना पता नहीं कहाँ से आ रहा था ना. But I think yeah, the hope is to do that. With the podcast, again, just wanted to give it one proper, like I felt ये पहले ही हो जाता, लेकिन the last studio उसमें जो situation थी वो कुछ ऐसी थी कि वो unrequited रह गया था. And I wanted to come back to the podcast. And मैंने जैसा आपको बोला ना, podcast is one thing I can imagine myself doing it forever, right? Because if people want to know, it's strange, but I think this is an antidote to my loneliness, right? Because I grew up lonely. So I had my siblings and I had my family, alhamdulillah, like a karam hai, but I didn't really have any friends, right? And it's not so much that I coveted the relationship, I coveted the conversation. I think conversation is a beautiful thing, because I think conversation begins when you stop throwing stones, right? Yeah. And so it is by default, it is symbolic of peace, right? Or at least an attempt at it. Or Freud ne farmaya tha na ki the first person who threw a stone instead, threw an insult instead of a stone was the founder of civilization. I think even if you're insulting me or whatever, you're going hard at me, I think that is beautiful, right? So the podcast is just me speaking to interesting people, and so I don't think it'll ever be monetizable. ये feel होता है मुझे, like maybe people like Irfan bhai, people like yourself, or some जोके भाई आए थे, people like you guys are going to be like, okay, हाँ ये monetize कर सकते हैं, but to what degree, I don't know. I think this is something that I do primarily for two reasons. A, because I enjoy it, alhamdulillah. But two, also, अगर कोई बेहतरी आनी है इस चीज़ से, तो वो ऐसे ही आनी है कि यार दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन लेते हैं इनकी बात ठहराव से, इंशाल्लाह. Having said that, I obviously want to also make it as good as I can, as qualitatively speaking. But long-term financial plan यही है कि
एक content creation को give it one proper go कि अच्छा ठीक है अब जो है now I want to be palatable because इससे पहले आप आए थे I was like नहीं मैं तो chapters भी नहीं डालूंगा podcast में क्यों डालूं मैं chapters उनको सुनना पूरी सुने but now the content that I want to make I want to try and make जो ये भी बना रहा हूँ मैं short form and all those things and then to also try and see what else can be done because I'll tell you something that's very interesting. You know, Google has that ability now कि वो जो सर्वे भरवाते हैं कि मेजॉरिटी आपकी क्या बनना चाहती है आपके मुल्क में. So for Pakistanis, guess the number one occupation that everyone wanted? YouTuber. Writer. They want to write stories. You know, nice. Because we're so taken by stories, and so my hope is not to become a storyteller so much as I want to teach people in the most basic sense, which is through writing, how to tell stories. Right? अब उसका framework नहीं बन सका है अभी तक. आ जाओ हमारी academy में आ जाओ. Yeah, we have an academy. Sorry, shameless plug, but like Builders Meta के नाम से we have a business community. Okay. It's monetized. You can set up a course live. Real time के अंदर not recorded, like real time में ऐसी बैठी computer के सामने you say whatever you want, we'll get you students and whatever we make we split on it. Oh, that's okay. That was easy. मैं मतलब सोच रहा था कि long term plan होगा. मैं सोच रहा हूँ bro execution वाला बंदा बैठा हुआ है तुम्हारे साथ. तुम जो बोलोगे we'll do it. आप समझ रहे हैं ना? I'm an artist ना. अभी मैं सोचूंगा इसके बारे में. I'll probably have to take a trip to Nathia Gali. अल्लाह माफ करे. But yeah, that sounds good. So that's one. Because I feel like when I went to writing school, one of the things that happened was my feelings and everything that ailed me became clear through my writing. Right? And I feel like even though you'll be like, nahi, main writer nahi hu, but I saw you develop a script in front of me. Yeah. You're literally, everyone's a writer, right? I don't know one proper content creator who doesn't write. I don't know one proper singer who doesn't write. I don't know one proper musician who doesn't write. Interesting. I don't know one proper CEO who doesn't journal, right? So writing is integral. So my hope is with I haven't even pitched this idea to anyone. I haven't started the conversation, but the hope is to develop a writing school of some sort. And then obviously again privilege hai thoda sa. But I can't teach you I can't fix your grammar. You know? So जो लोग आएंगे वो particular लोग ही आएंगे. Yeah, and that's fair. ठीक है. But जो लोग आएंगे, inshallah, I'm not saying they'll be ace storytellers, but they will find some direction as to what it is, where it is that they're going, where it is that they've been coming from, and it is a difficult thing. So अभी तक the reason why I wasn't offering this so far was I was like लोग शायद मेहनत नहीं करना चाहेंगे, but then I feel like अब अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है मेहनत ना करने का, अब अगर वो मेहनत नहीं करते हैं, mental health is at an all-time low. Suicide rates are at an all-time high. Divorce rates are at an all-time high. I think, and I really do think a lot of that has to do with writing. And the long-winded answer to your question is, money making 101 is find something that is of value, find a problem, and then posit your solution to that problem, and then monetize. So in all of this, I am not at all suggesting that I don't want to make money. You know, you made, it was a funny exchange that we had on the video where you were like, how much do you want? I was like, no. See, we do not disagree on principle. If you say you want it all, agreed. I want it all, right? But it's just work ethic wise, we've been not on the same page for a while. But so long-term plan is that give content creation a proper go, and then definitely do something with writing. Because beach mein I also tried the psychotherapy route, but you told me about that. I don't know. I mean, it's helped me develop into a person, into whatever it is that I am today. Lekin I don't think I can do that. You know, because most people, वो वाली बात है, they don't want to be inconvenienced. Most people are like, नहीं online दे दे. Online therapy नहीं होती. With respect. I don't believe because you need to feel this. Whatever it is, मेरे रोंटे खड़े हो रहे हैं, if there's scars on my face, if I'm generating a certain kind of heat or certain kind of odor, how are you going to tell if I haven't showered in 20 days, which is one of the primary symptoms of, you know, depreciating mental health. So how are you going to figure that out? So I don't know. But yeah, long term,
I think ye hai, inshallah. That's the plan. But yeah, I also think I want to keep myself open to possible collaborations and stuff. I recently visited आपको पॉडकास्ट के बारे में बता दूंगा किसका मैं बात कर रहा हूँ, but I recently visited a very big channel setup. Okay. Right? And उनको भी मैंने very openly I was like, no, I'll work with you. But अब you're gonna have to pay me. Yeah. Right? And they were like, As yeah. it should be. Yeah, they were like, yeah, but no, but we want. I'm like, oh, no, not only are you going to pay, I'm also not going to work 9 to 9. I'm a consultant. Yeah. Right? You're outsourcing. If you're outsourcing, you're going to have to let me do my thing. Do it the way I want to. Do you have any ideas for me? Are you going to share off the podcast? यार एक चीज तो जो I think last time भी जब हमारी बात हुई थी उस वक्त मैंने तुम्हें बोला था कि I think that the two of us should host an event and get a bunch of people in and run it like a workshop on just improving themselves. Oh, 200%. है ना? Yeah. वो फिर बड़ा back burner पे चला गया था. Because you were busy making millions. मेरी गलती नहीं है ये भाई. But I think कि वो तो हमें करना चाहिए. एक event करते हैं. Yeah. And I think अगर वो अच्छा जाता है तो फिर वो एक पूरी एक string of वो चीज बन सकती है कि यार अच्छा this is a platform. I've also been very interested in setting up a mental health for men association type of thing in Pakistan. क्योंकि अगर कोई है तो clearly it's not doing a good job because none of us know about it. Yeah. Yeah. And I feel like the kind of pull that we have and the kind of influence that we have, especially with young men, I think होनी चाहिए. Helpline होनी चाहिए. एक suicide helpline होने ज़रूरी है यार पाकिस्तान के अंदर लड़कों के लिए. आपको टेंशन है फ़ोन करे बात कर लो यार. कुछ ना कुछ अब मुझे I'm starting to look into that direction कि यार. And I know for a fact कि शायद funding ना मिलेगी because जो ग्लोबल इस वक्त नैरेटिव है वो मर्दों के हक में नहीं है. तो आई डोंट थिंक कि फंडिंग मिलेगी बट कर लेंगे, खुद फंड कर लेंगे यार. नहीं हाँ फंडिंग इंशाल्लाह हो जाएगी. क्योंकि इस तरीके की चीज़ें यूजुअली फंडेड होती हैं. वो आप एनजीओ वगैरह बना लेते हैं, पैसे आ जाते हैं. बट अभी तो मर्द जो है वो दुश्मन है जनरली ना. तो मगर जो दुश्मन बनने की जो रीजन है हम उनको तो इरेडिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं. इरेडिकेट कर देते हैं फिर देख लेते हैं क्या होता है इंशाल्लाह. तो मैंने खैर आई थिंक 1 महीने पहले भी स्टोरी लगाई थी कि यार आई वांट टू सेट अप समथिंग फॉर मेंस मेंटल हेल्थ. मे बी लाइक सपोर्ट ग्रुप्स टाइप की, अल्कोहलिक एनोनिमस वाली टाइप की चीज कोई नहीं होती है. मतलब नॉट फॉर बेवड़ास बट लाइक फॉर जस्ट गाइज हु आर स्ट्रगलिंग विद शिट. यार एक सर्कल में आके बैठो, टॉक टू पीपल हु आर विलिंग टू लिसन. क्योंकि हमारे पता है ना सर्कल्स में क्या है कि आप एक बच्चा अगर थोड़ा सा disturbed है तो बाकी बस ले रहे हैं उसकी मजाक उड़ा रहे हैं. तो वो that's not the circle that you want to talk to. So we can create those circles. Absolutely can. Absolutely should. Yeah. Absolutely should. I think वही वाली बात है, you create value and again like I said, it's not that you shouldn't monetize it. Yeah. You shouldn't be heartless. Right? Yeah. बस ये फर्क है एक I think. फोन नहीं चूसना है. नहीं of course. There's a fees, वो सारे manage करना and all those things are absolutely fine, but I think pertinent what you said it's the circle that you're looking for is not the circle that you have, because making fun of each other is not going to fix this. Absolutely. और I think हमारा I think by default एक I don't know हम क्यों ऐसे condition हो गए हैं कि हम for men at least everything is being countered with stupid comedy हमारे सोसाइटी के अंदर. मतलब हर चीज पे बस मजाक में लेना है, हर चीज पे मजाक उड़ाना है. रोस्टिंग इज सो कूल दिस एंड क्यों, मतलब ये these are all damaging traits right now. I sense think of humor को शायद वो यूज कर रहे हैं as a defense mechanism, but it's terrible. It's horrible and I'll tell you exactly why that is. जो मैंने पहले भी कहा ना कि what happens if I don't make fun of you? What happens if I don't make fun of your accent, of your dress sense, oversized shirt कौन पहनता है? Well, if I don't do any of those things, then I start to realize immediately कि यार he's not so different than I am. And he's the same. And if he is just like me, well, my life is not like his life. Yeah. And if it's not his inherent advantages, then it must be something that I did. No. But I mean, imagine how painful that realization is. Something that I did, dude. Meaning I don't work. So I didn't work as hard as I could have. Yeah. I think that's a horrible realization to have. You know. Yeah.
I think, and वही वाली बात है, yeah, I think all of this is fantastic. We should definitely set up a helpline, all those things. Because बाहर पता है, this goes without saying बाहर है. Yeah, by default चीजें ये exist करती हैं, बिल्कुल. और हमें जरूरत पड़ रही है. हो सकता है शायद 10 साल पहले जरूरत ना पड़ती हो, फुल लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाले होते हों, बट अब नहीं है यार. मतलब if लोग कहते हैं मर्द सॉफ्ट हो रहे हैं, अच्छा भाई तो फिर हो रहे हैं, मगर हो रहे हैं ना. आप उसको जैसे भी देखना चाहो, for whatever reason आप हो रहे हैं ना, तो आप बस ये बोलते रहोगे हो रहे हैं और उनको होने दोगे, या कुछ करोगे उनको बचाने के लिए. You stop the bleeding first, right? Stop the bleeding. तो that's what अब मेरा जो next goal है, फाइनेंशियल से हटके वो ये है कि इस तरीके की चीजें सेटअप करनी है. I think that's fantastic. I think that is also a fantastic place to end the podcast. Yeah. I think that's super inspirational, inshallah. And thank you. You always, Ramish bhai, always are very generous with your time. And I appreciate you and the work that you do. And I hope ये caricature वाला जो है ये 6 महीने में मिलियन कमा ले ताकि हमारी पॉडकास्ट जल्दी हो जाए. मुश्किल है मगर हो सकता है. हो सकता है ना. आप जान लगाओ ताकि मैं पॉडकास्ट फिर से कर सकूं. देखो ऐसे what is this? But यार इसको स्पॉन्सर करवा देते हैं. 1 मिलियन ओके. अगर 1 मिलियन मैंने बनाया ना caricature शॉप से, तो I will sponsor क्या कहेगा काजी for a year. For a year. You've said it on video. Yeah. I didn't ask for anything. Yeah. सही है. $100,000 की पूरे साल की स्पॉन्सरशिप. अल्लाह रहम करेगा. Thank you. Do you want to Instagram? You don't care, but no, it's okay, man. Just जिसको पता है उसको पता है. Just be good, I guess. And yeah, we'll see you inshallah. Yeah. Assalamu alaikum.